अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ्रीहा अल्ताफ़ फ्रॉम FWhy पॉडकास्ट। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज वो खुशी वाला दिन है। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो आपको खुश करते हैं, उनका काम ही ये है, उनका शोबा ये है। तो आप इमेजिन करें कि लाइफ उनके साथ कैसी होगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरी आज गेस्ट जो हैं वो आप मुझे खुश करने वाली हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि उनका नाम क्या है। वो वाहिद खातून है जिनको मैं जानती हूँ, जिन्होंने एक चीज़ शुरू की पाकिस्तान में जो कि मैंने पहले नहीं सुना था इसके बारे में। और जब मुझे पता चला उनके बारे में, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे बहुत मज़ा आया उनकी बातें सुन के, उनका मजाक सुन के। मजाक से समझ गए होंगे that she is somebody who does improv. She's a comedian. She's very well known. She made her name on social media and then coming into the mainstream television and films. And let me just go ahead and introduce her. And I don't want to say everything, so let her say something. This is Faiza Saleem, and thank you and coming. Welcome to my show. How are Thank you? you so much for having me. ओहो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। है ना? मैंने कहा ये आई है और आज बहुत मज़े की गुफ्तगू होगी। यू नो वी हैड यासिर ऑन द Yeah. शो Yeah. एंड वो भी उसमें सीरियस चीज़ें भी थी, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया। यू नो इट वाज वन ऑफ द पॉडकास्ट दैट आई रियली एंजॉयड। He has a very good energy, so he's always Yeah. good to be around. Right. And that's not the case with all comedians, by the way. If you notice, some are very serious and very Well, difficult to communicate with. This is true. So let's start this whole podcast because इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि आप बहुत यंग हैं और आपने बहुत ही जल्दी एक चीज़ को पकड़ा है जो कि मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में, एंड बहुत ब्रेव है। आप बहुत ब्रेव है। मैं जो आपके बारे में रिसर्च भी देखती हूँ या मैं जो आपकी चीज़ें सुनती हूँ जो आप मुझे भेजती रहती हैं और मुझे मज़ा आता है कि यू नो कि आप वो सब्जेक्ट्स उठाती हैं जो कि ज़्यादा लोग अक्सर बात नहीं करते। लेकिन हम शुरू करेंगे आपकी ज़िंदगी की पैदाइश से। पैदाइश से? हाँ जी, किधर पैदा हुई हैं आप? कराची में पैदा हुई हूँ. Okay. I am one of 4 children. अच्छा, 4 I'm the बहन हैं। youngest. Basically इसीलिए ये सब कॉमेडी वगैरह करने का मुझे चांस मिला लाइफ में. Because you know when you have siblings, हाँ. and when you're the youngest sibling, you get away with a lot. तो बाय द टाइम पेरेंट्स मेरे तक आए थे तो थोड़ी लीनियंट हो चुके थे ऑलरेडी. अदरवाइज मेरी फैमिली में डॉक्टर्स हैं or you know business women, like it's a very non-media, except for my brother who also did a bit of television back in the 90s. And unke alawa like it was unheard of. We didn't have anything to do with media. So because I'm the youngest, I'm the youngest by 10 years. So 10, 15, 14 years ka sabse age difference hai. I was born and raised here, but I spent a lot of my childhood in Germany because that's where my family was initially settled. Do you speak German? No, very कुछ little. तो आता होगा। बहुत bitte schön, danke schön. Danke schön. Yeah, danke Which is schön. thank Thank you. Yeah. Stuff like that, but not a lot. But I spent a lot Where? of years. Limburg and Frankfurt. So you were born in Karachi. I was born and raised in Karachi, but I spent a lot of. What does your father do? क्या करते हैं? So my father isn't Around anymore? He yeah, passed away? do we have to talk about that? No, did he pass away? Yeah, he passed away. I'm so sorry. Yeah. No. So you have mom? Yeah, so I have my mom and I have my siblings. Okay. And yeah, I have my husband. That's our family. And there's my mother-in-law. We have on my But husband's you're side of the living family. in your mother's house now? No. My mother-in-law, my husband and I, we live together. अच्छा, ठीक है। Yeah. अच्छा, तो नॉर्मल होता है ना। खैर anyway, कुछ आजकल नॉर्मल नहीं है। But I'm just saying कि अच्छा आप यहाँ पैदा हुई, आपके कितने बहन भाइयों में लड़के कितने, लड़कियाँ कितनी हैं? एक भाई और 2 बहनें. 2 बहनें और आप सबसे छोटी हैं? हाँ, सबसे छोटी. यानी कि बहनें तो हैं ना? तो बहनें. भाई लाडला है या नहीं? पता नहीं, मुझे हर एक को लगता है कि वो स्पेशल है, लेकिन मुझे लगता है मैं हूँ. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट दैट माई पेरेंट्स वर वेरी नर्चरिंग एंड वेरी लविंग टुवर्ड्स मी. सबके आई थिंक पेरेंट्स होते हैं, बट एक्सेप्शनली आई थिंक माई सिबलिंग्स आर ऑल्सो वेरी दे लाइक पेरेंट्स टू मी. अच्छा, छोटी थी ना? हाँ, तो और वो चुटकियाँ वुटकियाँ नहीं काटती थी? बस्ती थी तुम में? हाँ, हमेशा से? तो ऐसी थी प्रिया कि इफ यू सी वन ऑफ दोज होम वीडियोस ना मेरी, so you'd be surprised कि बच्चा ऐसे कैसे behave कर सकता है at that age. You know, I always like to make people laugh, sometimes even at my own expense. You know, Yeah. I do things around the house. I'd Pranks. School में भी, you know, I was always bubbly, chatty, and
Sometimes I'll also be shy. I have, and I still am a little bit introverted sometimes as Okay. well. Like I have my days. Right. Although लोग देख के हंसेंगे कि कितनी मैं झूठी, but I do feel that there is an क्यों introverted side नहीं? of हर me. इंसान हर इंसान के वो लोज होते हैं, हाईज होते हैं. इंसान सारा वक्त तो नहीं ही But करेगा. लोग No, I can't comedians do से it. यही expect कर रहे होते हैं. Yeah, you're right. They expect that I'd come in and I'd put on a show and I'd be making jokes and like impromptu कहते हैं ना कि खड़े होके डांस करो. किया था बचपन में? बताओ, किया था ना? डांस नहीं है तो but ये ऐसे like shows बहुत मैंने किए घर में. Really? Yeah, ऐसे क्या मेरा करती थी खाला तुम shows में? stand up उस बारे में पता नहीं था वो stand up पे. किस उम्र में? Very young, like I think I must have been 6, 7, 8 years And old. what would you do? I Like, would just talk about family members. I talk about, so I went to उनका school. मजाक every day. उड़ाती थी तुम? हाँ, like कि चाची के गालों के अंदर तिल है. नहीं, फिर things like funny things they'd say or do, because I was very observant. I think a lot of my comedy comes from observing people. And I think I'm very good with feelings. तो उनको मैं बड़ी जल्दी पकड़ती हूँ. तो I think that really helped. So I would make fun of people at home. I'd just नौकर चाकर भी है. sketches. Anybody. कोई थी मासी तुम्हारी maid? So there was we had help. His name was Shalom, who was around since the day I was born, I think, or much longer. Like Family than member that. हो He गया was ना? a family member, so I would really like drive him up the wall. उसके साथ बहुत मैंने time spend किया. So I would make like fun of him. He would make fun of me. I would tell like the family कि आज ये हुआ वो. Like there was lots of like tamasha happening at home. कोई There was ऐसी चीज always, you like, got into trouble? ऐसी trouble I चीज would बोल get दी? into trouble at school. Really? Yeah, because I had become too much at school Why? by 6th Give grade. me an incident. I don't know why. I think I started bullying kids. You were bullying kids? Yeah, because I used to be bullied when I was Okay. much younger. So I think the way I learned to cope with it, and I'm not proud of that, but I think that was my coping mechanism. कि आगे से मैं भी वो हो गई बड़ी like It's a very important thing you've said, because Yeah. I think हमारे साथ जो होता है जब बचपन में Yeah. हमें नहीं पता होता कि is this right, is that wrong? Obviously you're feeling hurt and uncomfortable, and then you're like trying to defend yourself. Yeah. And in that defense mode फिर हम कहते हैं अच्छा जी हम भी फिर पड़ जाते हैं ऑफेंसिव पे. हम भी ऐसे ही करते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि ये सही नहीं है, और बाद में जाके हमें समझ आती है कि यार ये गलत था. Yeah. Oh, wow. Okay. Yeah, so I think that was That's how you got into trouble? yeah, so I got into trouble because I would go overboard. I became too I want naughty. to know, yaar. I would like it just क्या too naughty. करती Like, क्या I would get थी? my friends and I would also get them to gang up against someone. It could be like one of my best friends. There was a best friend of mine, Amin, and I don't know why I started getting like really bullyish with them. I can't explain to you now, but later when I realized, I said this is the vicious cycle of being mean. वो तो तुम्हारा दोस्त था लेकिन. फिर भी पता नहीं क्या हुआ था. It's a vague memory that I started, and it wasn't just one person, it was multiple people that I would like have my friends gang up on, and I would start bullying. उस वक्त भी गैंग था तुम्हारा. अभी भी गैंग गैंग तो मेरे पास हमेशा से रहा है. ये है कि जितना अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, I always had a lot of friends. Right. I just been one of those people who have a lot of like good friends. Right. Even now other friends of mine would comment on how great my friends are. They're good people. Because Right. that's the only thing that I look for in friends. Like I don't care कि वो क्या उनका background है, वो उनकी क्या class है, वो किस type की है, कुछ भी नहीं. If you see, I have like a wide assortment of friends, and you'll be like, अच्छा इससे भी दोस्ती है, इनकी कैसे आपस में, इनका तो कोई match नहीं है, कोई link नहीं है But बनता. I think it maybe goes back to the time that you knew Shalom. Yeah. You know what I mean? Yeah, Because as a child, Yeah. sometimes we are learning things and we are class conscious and everything, and sometimes we're not. Yeah. You know, we're more angelic and more innocent, and you do When you're younger. warm up to people who are warm. Any child will warm up to somebody who warms up to them. Yeah, ये that बहुत is true. natural That चीज़ is है, true. Yeah, है ना? So Shalom also moved away, and I looked for, and I found him much Really? later. Around the time that I got engaged, I found him. He was there at my Nice. engagement, so we reunited as well. Wow, lovely. Yeah. So
So, and I think it's also because my parents were always very like, we wouldn't talk about money, Frieha. Like, we wouldn't talk about, oh, uska ghar dekha, ya uski gaadi dekhi. Like, I kid you not. Anyone who knows me knows that I'm not interested in that sort of conversation. Even now, कि किसका घर कैसा है, या किसकी गाड़ी कैसी है, या you know किसके पास कितने पैसे आ रहे जा रहे. Like, people would ask me, इसके कितने पैसे मिले? अच्छा, उस शो पे बुलाया, उसके कितने पैसे मिले? Why do people पाकिस्तान में कितने पैसों की कितनी होती है? उम्र, एक तो आपकी उम्र क्या है? या और आपने मेकअप लगाया हुआ है कि नहीं लगाया? अच्छा, इसलिए अच्छे लग रहे होंगे, मेकअप लगाया है, पैसा इसलिए कि हराम कमाते हो. मियाँ की शक्ल खूबसूरत है कि नहीं? Am I right? हर चीज जो सुपरफिशियल है ना, उसमें हमें इंटरेस्ट है. कितने पढ़े लिखे हैं? नहीं, अच्छा इंसान है कि नहीं है, यू नो, टेल मी फिलैंथ्रोपिक है कि नहीं है, जेनरस है कि नहीं है, यू नो, लाइक टुवर्ड्स योर पेरेंट्स क्या एटीट्यूड है. शैलो चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है हमें. द नंबर ऑफ पीपल फ्रीहा हु हैव आस्क्ड मी कि तुम्हें इस चीज़ के कितने पैसे मिले इज जस्ट it's insane. And even though I talk about it a lot very openly, I don't like these discussions. ना मुझे पूछना है कि आपके घर में क्या finances आपके, ना मुझे बताना है कि मेरे घर में क्या है. But फिर भी लोगों को इतना interest होता है that they don't care, even though they know that it's something that offends me, they'll still ask me personal questions. हमारा ये problem है because हमें अपनी लाइफ से ना हम लोग खुश नहीं होते. हम दूसरे की लाइफ में हमें होता है कि यार कुछ तो निकालो यार, घुसना है. और ये भी impress हो जाते हैं कि भाई इतने पैसे मिले तो इज्जत भी देना शुरू करते हैं पैसे की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ कि ये इस लड़की में इतनी जुर्रत है, ये खड़े होके ये कॉमेडी कर लेती है, जो कि अच्छों को नहीं कॉन्फिडेंस आता. भाई खड़े होके एक स्पीच भी देनी लोगों के लिए मुश्किल होता है. यू नो, बड़ा CEO भी हो ना, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है. लेकिन कि आप, मैंने ये सबसे पहले तुम्हारी इंट्रोडक्शन में यही बात की बिकॉज इतना करेज. और अब जो तुम बता रही हो कि बचपन की कहानी है कि तुम उठ के सबका और तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें इंकरेज किया, लोग कहते बैठ जाओ, चुप कर जाओ, खबरदार बोली, राइट? नहीं, उनको ये नहीं पता था कि करियर बन जाएगा. आई थिंक तब शायद रोकते, बट क्यूट वो क्यूट में निकल गई हाथ से. क्यूट कह के वो थोड़े से म्यूट हो गए कि कहाँ चली गई बात. One of my khalas, by the way, she was very encouraging and she would make us do sketches. So sketches भी हम तब, जब sketches का कोई concept नहीं था, तो हम sketches बनाते थे, गंदे फोन से रिकॉर्ड करते थे घर में with my cousins and my aunties and everybody. So we've always been like fun loving. That's great. I mean, obvious कि it was एक confident सिस्टम में तुम बड़ी हुई हो. और उसमें तुम्हें लोगों ने ये नहीं कि मार पीट के बिठा दिया और चुप कर जाओ और खबरदार ना बोलो और ये क्या हो रहा है और मिक्स नहीं करो इस तरह से. और वो कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस, यू नो, बिकॉज इतना कुछ करना इज़ नॉट ईजी. आई थिंक दिस इज़ अ comedy can become horror also at some point. Am I right? And horror can become comedy. It's so stupid that it's not ये क्या कर रहे हैं लोग हैं, right? You know, like the doll running after, you know, it becomes stupid and funny. It's not even horror anymore. And comedy can be so horrific that you can go into that thing. Bizarre. So basically, okay. So and then, I mean, then you went into freaking law. और मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा ये आर्ट्स में क्यों नहीं गई? Why did you go into law? So like I said, बचपन तक तो ठीक था. Like, you know, I think no one was expecting that I'd make a career out of all of those stand-up shows and sketches happening at home. So I wanted to go to Napa. And you did want to go. I did want to go, but that was not an option. हाँ, तो ये ज़्यादा हो जाता है उनके लिए उस टाइम पे, because Frieha, when I started, अब तो बहुत नॉर्मल हो गया. अब तो कोई इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर ना हो तो बड़ी बात है. Everyone's on social media. Everyone's, if they're not, अब तो कॉमेडी करना भी आसान है. रील बना लो, लिपसिंग कर ली, कॉमेडी सभी कर रहे हैं. पाकिस्तान में तो टिकटॉक की शान. I mean, like TikTok is, who is not creating content anymore, everybody is, right? पर उस टाइम पे नहीं था. And उस टाइम पे लाइव परफॉर्मेंस ज़्यादा करती, थिएटर ज़्यादा करती थी, इम्प्रोव ज़्यादा करती थी, as opposed to social media. So you were doing theater? I was also doing theater. स्कूल से लेके मैंने I've always बंद नहीं किया. मैंने कभी बंद नहीं किया. हॉबी की तरह था. It was I wouldn't even call it a side hustle because कोई पैसे नहीं मिलते थे. I remember like we'd have chicken rolls and like samosas type things in exchange for doing a play or or like you know sketches होते थे कभी कभी. उस टाइम पे इतना नहीं होता था. like the theater होता था but comedy sketches, stand up comedy, improv comedy इतना नहीं था. ये पहले की बात बता रहे. this is like 2011
People didn't know actually. People didn't know. Influencer I used term to नहीं do था. it. Yeah. Believe it or not, when I Yeah. came back from college Yeah. and I studied theatre. Yeah. तो हम लोगों का तो एक डेड पोइट सोसाइटी भी होता था. हाँ सीरियसली. और फिर हम वहाँ जाते थे और फिर वो डेड पोइट्स पोइट्री से कहीं ना कहीं इम्प्रोव्स पे निकल गया. और फिर इम्प्रोव से तमाशा बन गया. फिर लोग आने शुरू हो गए और फिर वो पोइट्री कम हो गई. तो फिर हमने कहा ये तो जो चीज़ थी वो ही ख़त्म हो गई. लेट्स डू समथिंग एल्स. यू नो बट आई नो कि यहाँ पे थिएटर का इतना कॉन्सेप्ट है भी नहीं. क्वाइट फ्रेंकली थिएटर बहुत कम है. You know? एक ज़माने में आई थिंक था, इस्लामाबाद में था, कराची में भी था, बट अब तो बहुत कम हो गया. एंड पेंडेमिक में लाइव परफॉर्मेंसेस बिकेम क्वाइट as you know, they became quite tough to pull off. वो तो अभी 2-3 साल की बात है ना. बट वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि ठीक है. आई मीन आई हैव ऑलवेज गॉन. जब भी कोई थिएटर होता है मैं ज़रूर जाती हूँ देखने के लिए. बट वैसा नहीं है जैसे कि उसको इतनी अटेंशन नहीं मिलती जितनी कि आपके से किसी मूवी को मिल जाए. फिल्म का प्रीमियर हो रहा है तो सारी दुनिया पहुंची होती है. हालांकि इतना डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म है. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म है बिकॉज इट्स लाइव. It is amazing how some theater actors can make you cry and laugh at the same time while being right there in front of you. No cuts, no edits. बस वो तो it is very difficult. So उस टाइम पे मैं करती थी तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त ये करने का. So my parents, I mean, it was something that I was also a bit worried about myself कि मैं बात भी कैसे करूँगी इस बारे में. Like ये कैसे करूँ and खुद भी कैसे करूँगी. There wasn't any money involved at that time. अब तो बहुत चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं. तो फिर लॉ में चले गई. तो लॉ में मुझे इंटरेस्ट था. ऐसा नहीं कि नहीं था. एंड आई डू फील दैट समहाउ the two are connected. Because I think doing law helped me with public speaking, helped me with polishing my beliefs in a way, you know, to work on my beliefs, to understand who I am as a person. I think doing law did play a huge role in that. So I'm glad कि वो किया. डिग्री मेरे ख्याल में ज़रूरी है. आजकल बच्चों को यूट्यूब पे अपना सेल्फ चैनल बनाना होता है. बट आई डू फील कि वो भी इम्पोर्टेंट है कि उनको पता हो कि पढ़ाई करना ज़रूरी है. एजुकेशन तो कहीं जाती नहीं ना. इन्फॉर्मेशन है दैट यू आर लर्निंग. तो जो हर कोई भी आप कल को तुम अकाउंटेंट भी बन जाती है. अकाउंटिंग भी कर लेती है तो मैं फ़ायदा होता है ना. पढ़ाई का फ़ायदा गिन सकती हूँ ना. ये इतने कम दिए. ना भी पढ़ती तो मैं गिन लेती. इतनी पक्की तो मैं थी. हमेशा मैं लोगों को कहती हूँ. मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ. इवन इफ यू डोंट, और किसी को भी, इट डजंट मैटर कि आप क्या करो, किस में डिग्री करो. यू कैन गो साइडवेज. पीपल डू ऑल द टाइम. और लोग ये भी करते हैं कि बहुत अरसे तक डॉक्टरी करके मुझे ये नहीं करना. मैं मुझे कुछ और करना है. A lot of people are not happy even now. Like I meet so many people who like नहीं हम बस we're not happy with our jobs. Most people, unfortunately. You think ये इसलिए होता है कि हमारे कल्चर में आपके जो फैमिली है वो डिक्टेट करती है आपको क्या करना चाहिए. Pretty much हमारी फैमिली डिक्टेट करती है. अगर फैमिली डिक्टेट नहीं भी करती, आई थिंक सोसाइटी बहुत डिक्टेट करती है कि क्या सही है और क्या रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है. शुरू में फ्रिया when I would tell people that I do comedy for a living, थोड़ा सा ना blank face होता था. But then when I say that I am a lawyer by qualification, lawyer. हमें भी लॉ का बड़ा शौक था. ये भी आता है. ये भी आता था. हमने भी पढ़ने की कोशिश की. कितनी वॉर्प थिंकिंग है ना लोगों की. और ये भी नहीं सोचते. मुझे पता है कि आई नो जिसमें तुम कह रही हो कि डॉक्टर्स और हमारी फैमिली में आई हैव 150 डॉक्टर्स. So it was just like the family came straight from village and education was so important कि सबको डॉक्टर बना दिया. सबको अमेरिका भगा दिया. और एक हम वाहिद थे बच्चे जो कि हमें तो कुछ और करना है. हाँ. एंड इट एटलीस्ट ये कि इंकरेज हमारे पेरेंट्स ने हमें वो नहीं कहा कि ये ना करो. यू नो ठीक है. बहुत सारी चीज़ों पे रोका पकड़ ये कि ये ना करो, मॉडलिंग ना करो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सपोर्ट सिस्टम पीछे से आ रहा होता है वो भी बड़ा ज़रूरी है. फिर लॉ के बाद क्या हुआ? फिर लॉ के दौरान कर रही थी छोटे मोटे सा. ये तो मैंने कभी नहीं छोड़ा. तो मैं करती थी. टू बी ऑनेस्ट फ्रिया, ये मैंने 1-2 जगह और भी बताया हुआ है कि मैं घर पे बताती नहीं थी दैट आई बी डूइंग थिएटर. एंड 3-3 महीने की रिहर्सल्स होती हैं. 4 महीने की रिहर्सल्स होती हैं. रात तक लेट नाइट तक होती हैं. झूठ बोल के अनफॉर्चुनेटली जाती थी. कोई बात नहीं कि क्योंकि पढ़ाई का होता था ना कि पढ़ाई हो रही है कि क्या हो रहा है ये. यू नो व्हाट आई मीन. तो उस वक्त समझाना बड़ा टफ था. तो बस समझाने की कोशिश भी टू बी ऑनेस्ट इतनी मैंने नहीं की. जैसे हाँ बस गुस्सा होंगे तो बस चलो खुद ही कर लेते हैं. सो कंबाइंड स्टडी का बोल के
I would go. मगर क्यों गुस्सा होंगे? अच्छा इसीलिए क्योंकि they don't take it seriously. इसमें कोई फ्यूचर नहीं और है. थिएटर और उसका वो तो मैं बोलूँ अब आज शायद किसी पेरेंट्स को आप जाके बोलोगे तो कहेंगे अच्छा ठीक है I don't think डिजिटल so. शायद आई थिंक 5-10% मे बी चांसेस है उसको चांस नहीं था ना कोई नहीं करता था तो लाइक कोई एक प्लेटफॉर्म पे नहीं करता था लार्जर स्केल पे नहीं करता था लोग पब्लिकली नहीं करता था अगर किसी को करना भी होता था वो एक्टिंग करते हैं मॉडलिंग करते हैं वो तो फिर भी वायबल प्रोफेशन समझे जाते थे उस टाइम पे बट आज से 8-10 साल पहले इम्प्रोव स्टैंड अप कराची में करना सोशल मीडिया पे क्या था सो अजीब सी बात थी ना कि मैं जाके बोलूँगी कि मुझे ये करना है बस सो रैंडम इन माई हेड ऑल्सो आई वाज थिंकिंग मोनेटाइजेशन नहीं थी ना उस वक्त. कुछ भी नहीं थी when I quit my job to get into comedy full time I didn't know कि मेरा अगले महीने क्या होगा because like I actually didn't know because I didn't want to be dependent on my parents. I always had this thing in my mind कि ये नहीं होगा कि मैं सारी जिंदगी बैठी रहूँ or I take it for granted that my parents are well off or whatever they can afford to take care of me but so what I always knew कि मुझे खुद करना है कुछ तो मुझे यही था कि अब मैं क्या Are your brothers and sisters independent? Yeah, Both completely. sisters are working. Completely, yeah. One of my sisters is still studying. She got married and then she got busy, so she's gone back to studying. Okay. And one of my sisters, mashallah, she's really successful. Like my siblings are successful. So basically, family में professionalism and all of this, Yeah. everyone and should hard work. working. Everybody's hard work. No one's a nikamma. Mom, what about mom? So my mom and all of her siblings, all of my mom's siblings, they're doctors. Their children. So my mother said कि मैंने तो डॉक्टर बनना ही नहीं है. अच्छा, she was also the rebel girl like you. Yeah, in a way. But she, in that sense, she was like, मैं डॉक्टर तो मैं नहीं बनूंगी. Even though her siblings are doctors, their children are doctors, their children's spouses are doctors, the siblings' spouses are doctors. Like you can't में पूरा hospital है. पूरा hospital है. उनको और कोई profession आज तक कोई पसंद नहीं आया. Yeah. But my mom was a homemaker. She wanted to take care of us, and like she's my like, mom. "ठीक है." Yeah. She. But then she put her 100% into it. We were never like given away to other people to be taken care of. We were always like my mother, like truly took care of us from scratch. Like बिल्कुल हर तरीके से आज भी आई थिंक मारपीट भी होती थी हल्की फुल्की ज्यादा नहीं वो क्या होता है हल्की फुल्की हल्की थोड़ा सा यूं कर दिया never the face she knew this was the money bum maker the bum bum is good okay bum was her only right, okay. target right. She would never like slap us and there was a lot of like there was a huge sense of self-respect in our house like my mother would always make sure कि हम लोग को like she made sure that we never felt disrespectful in front of people या एक होता है ना बच्चों को डांट देते हैं चीखने लगते हैं बेइज्जत कर देते हैं काफी पेरेंट्स अभी भी करते हैं इस एज में भी करते हैं और इस एरा में भी करते हैं You're right. कि डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं कि हटो यहाँ से जाओ तंग किया हुआ है my parents never spoke to us like that there was always this sense of you were an adult even if you're a child you would be treated like an adult you would be treated like an individual you would be given your due respect ये नहीं लेकिन कुछ भी चलता है समझाना ना I tell my mother she's still bringing me up she still tells me what to do and what not to do वो तो कभी मैं कहते हैं कि आपके भी जब होंगे बच्चे तो वो कभी ये जो जिम्मेदारी है ना कि बच्चे 50 साल के भी हो जाएं you tell them हाँ तो मम्मी विल स्टिल आस्क मी ना आपने खाना खाया कुछ खाया तुमने खा लिया करो बहुत दुबली हो गई हो कमजोर लग रही हो कुछ अगर मैं लाइक ओह गॉड आई एम लाइक 50 years old 50-60 years old almost bloody hell but that's so loving and so nice किस वक्त तुम घर आई हाँ किसी ने तुम्हें छोड़ा I mean all these things are okay right कोई आपका ख्याल कर रहा है right I still have to tell her कि मैं इतने बजे आ गई हूँ घर if I don't tell her she gets upset why didn't you tell me like I'm married now I don't have to tell you now so let me just stay out and just नहीं फिर वो आ जाता ना is he good to you हाँ ये भी बड़ी टेंशन होती मेरी अभी but my mother loves my husband हाँ in-law सही है हाँ ठीक है she doesn't ask me in-laws सही है तुम कैसी हो she still asks me कि तुमने ये किया अच्छा है बुली करके तुम तो छोड़ो ही ना अच्छा ऐसी की तैसी no I changed that because I was not a phase of it was a phase I'm just kidding yaar I will take a joke no because I was thinking in my head I should come back to it and not leave myself no I know Faiza Saleem's next cartoon thing is going to be about the in-laws, the outlaws. I've actually made sketches of बनाया हुआ as well. हाँ. People would say, oh, to my mother-in-law, आपके ऊपर बनाया. I was like, नहीं भाई. This is the सास बहू and in-laws के dynamics. They're everywhere in Pakistan. Every family, every household, there is some
You know, like they're similar issues. Right, right. Oh my God. Acha. So now I'm just curious, okay? And you, when I said about your dad, you were like really, you stopped me and kind of like, we have talked about why. Is it sad for you? Like I don't know. It's Hurts like you? sometimes I feel like I don't want to talk about it in detail. I feel like losing a parent has a slow drip effect on you. So Okay. initially it's extremely traumatizing, but then with age it gets a little bit worse because there are a lot of things that they don't get to see or be part of. So you know, okay. like a lot of things in my life, Yeah. my dad wasn't able to see. So Your wedding and your my wedding, graduation. everything, like Really? yeah, like yeah. So Yeah. I think he would have been happy because I remember when I was in law school, Yeah. I would take part in a lot of moot court competitions. So एक championship type थी that I won and वो newspapers में आया था. So my dad took all the clippings and he sent them to all the relatives, and he was not a very expressive dad. So I was really surprised के, you know, because he'd always be like Proud. math में क्या आया. You know? Yeah. He was one of those dads. Yeah. He was he seemed less easy to please than other dads, but the fact that he was doing that, तो मैं ये सोची थी कि like imagine अब इतने सारे newspapers, इतनी documentaries, what would he have said or felt? No, but he could still be watching up there. I just feel Yeah. like good energy is always something that Yeah. we think that, you know, they're gone or whatever we believe inside of it. But I always think that somewhere or the other, you know, you just know that they're there. I don't know. I lost my father about 25 years ago, and I completely understand what you're saying because he's the one I rebelled against, you know. जैसे तुम एक rebel हो तो मैं भी थी. तो वो इतना ज़्यादा हम लोगों की वो होती थी लड़ाइयाँ but at the end of the day जब मैं कॉलेज चली गई और स्कॉलरशिप ले ली और जब मैंने अपना काम शुरू किया, he was there at everything and he was part of it. And of course I feel the same way. Okay, yeah, he's not going to see my children married, he's not going to, you know, see a lot of things happening, but ये तो लाइफ है. बट फिर या बातें भी तो रह जाए, जैसे तुम अभी बातें कर रही हो ना, that's how you keep them alive. Yeah. You know, because those are the things that always, you know, with parents especially or people who are gone who are close to us, कहते हैं लोग चले जाते हैं उनकी बातें रह जाती हैं, फिर वो बातें ही आप करके उनको जिंदा रखते हो. So that's a very important thing. I'm sure you'd be so proud of you, and you'd be watching and saying, oh my girl. Yeah. But the reason why I don't like talking about it, I think it feels like I'm delving too deeply into it, and sort of makes everything a little bit tougher. Even on my social media, sometimes I think, oh, you know, I should ask people to pray for my father, and then I feel like I should talk about my father more because it'll reach so many people. Yeah. But it's just, I don't know. I just feel like it's difficult to keep bringing it up. That's and fine. Podcasts वगैरह में interviews में, I feel like, you know, I don't want to like talk too much about it. That's fine. I think it's also you come to whenever you come to it, you know, it takes time to, like you said, you know, deal with trauma, deal with any kind of tragedy, and everyone does it in a different way, you know. And anyway, so, but what I'm hearing is my parents, you know, so I'm hearing all the good stuff. So let's get back to all of that as well, because it's all good. That's how I see it, you know, because it's I mean, I was worried that it was a bad parent. No. You know, this is what came to me. I was like, no, my God, because she's saying my parents did this. So I'm thinking it's all good. It's just trauma for you. My dad was amazing. I'm not saying this because he was my dad, but he was amazing. Like even now, you go to Germany, you mention my dad, everybody knows my dad. Really? Yeah, he was quite the king of Frankfurt and Limburg. He'd get so many relatives from Pakistan. He'd take them there. So like Heidelberg. Shalom. He would I take went to Heidelberg. Abu used to go to Frankfurt all the time. Yeah, so I'm sure my dad would have known your dad. Wow. Because he knew everybody. What work did he do? So he had a factory, Palme Limburg, and he'd make gold-plated chandeliers. So his chandeliers they have them in Makkah, Medina, like lots of famous places, lots of kings' palaces. Wow. Yeah. Wow, that's pretty special. Yeah, he is that's very pretty special. So what happened to the business then? In 1998, I was quite young at that time. Things started falling apart, and that's when he came back and like everybody, all of us, like permanently moved here. My sisters then went off to England, and so they don't live here. No, they don't live here. But that's good, no?
Yeah. इसीलिए तो यूके के पिज्जा लगा वीजा अब समझ आया फैमिली को भी हर वक्त यूके का Really? कहीं ना कहीं का लग रहा होता है बट यूके का Yeah. मोर फ्रीक्वेंटली बिकॉज फैमिली वहाँ पे एंड नेफ्यूज एंड नीसेस भी हैं nephews and nieces. My nephew is my eldest nephew. He's just 8 years younger than I am. So no way तो दोस्त because of the age difference. So they're like my friends, and I keep telling them we're from the same generation. They're like, no, we're not. yes you but are I kind of am, right? 8 years and 10 years. जब बाकी फिर चलो छोटे हो जाते हैं, but जो 10 years छोटे और 8 years छोटे हैं, उनको मैं बोलती हूँ क्या difference है? नहीं मगर तुम्हें वो जेंजी है और तुम वो क्या कहते हैं मिलेनियल हो Yes, Am I yes, right? unfortunately, yeah. थोड़ा सा फर्क है Denial में हूँ मैं, तो छोटा करने की कोशिश करी है अपने आप नहीं मुझे मजा I used to play with them ना growing up. yeah. Imagine playing with your nieces and yeah, nephews. true. तो मुझे वो रो नहीं है, and they don't even treat me like a खाला. Of course. Very close to them. Look at you यार, they must be so proud of you. Must be going around telling everybody to be. They're the sweetest. वो हर वक्त Instagram पे they I'm find sure. random posts of mine also. They'll find on Instagram. They're always liking it. Yeah, and they're always telling me to commenting be proud of you. उनको पता था अच्छा इतने followers बढ़ गए अभी. Oh my God. They're very into the scene. Maybe that should become your new gang. Yeah. New gang. Yeah. Inshallah, let them grow up a little bit. Right. उनको भी मैं बनाऊंगी. Oh wow. तो मुझे अब बताओ ये सारा कुछ फिर how is it that when did you quit? You were working as a lawyer. Yeah. ना करो. I was heading the legal department at a public policy think tank. Wow. I was working on criminal investigation. I was criminal prosecution के ऊपर काम कर रही थी. Guys. Yeah. Imagine. अजीब सा डाउन आ जाते बोलते वक्त भी ना कि वो कचहरी के चक्कर. पुलिस स्टेशन थानों के चक्कर ज्यादा. It was more research based than going to court. थानों के मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाना इस तरह के. Black white suit with a black jacket. कभी सलवार कमीज is not as glamorous also. सलवार कमीज दुपट्टा. It's not Boston legal or something. Yeah, I know that. You know that. I've seen the Pakistani You know that. I lawyer remember going girls. to a court once and thinking, yeah, this is not what I had imagined because lawyer जो थैलियों में खरबूजे लेके जा रहे हैं, dogs वो barking at us. But it was just madness. It was very like run down the entire place. कितनी देर किया फिर? 1 साल तक किया होगा. That's it. Yeah. I would cry at my desk. Frieha. I would cry. I did my internship at a very prestigious law firm also. But I remember thinking I was doing well as well. But I just couldn't take it. It was so depressing. It was so not what I wanted to do, practically speaking. वो ना law का मसला ये होता है कि उसकी reality और उसकी जो imagination में बहुत फर्क है. You know, you think it's super glamorous and because super. you see Boston Legal and you see all these shows. So you think इतना मजा आने वाला है, and especially with criminal prosecution, you're like, yeah. I'll get the bad guys. Yeah. You know? You feel like a gangster yourself, but ऐसा नहीं होता. It's not. It's very unlike I told you. खरबूजे थैले में जा रहे हैं और dogs are barking. वो तो फिर भी I would still think that's funny. You're making it funny. Right now it is, but working in that environment, it's not funny. It was just horrible. I was shocked by this. अच्छा तो environment खराब था. It wasn't the criminals and बेचारों की कहानियाँ that was. No, वो तो बात की बात होती. It was not just the environment. It was just the overall feeling of. I think it wasn't even helplessness. It wasn't about law or any profession in particular. It was just about me not being happy with what I was doing. I just wasn't happy. I'm all about feelings. So feelings are very important to me. अगर आज भी if I don't feel like doing this and I feel like okay मुझे ये नहीं करना मेरा कुछ और करना, I'll do it. I'll take that chance, you know. If I want to do it. That's great, guys. I mean, that's a real lesson also. To just get up. It's a huge risk. It is a huge risk. And people get very comfortable. And can get a bit boring also. You have to also in your own profession में आपको evolve reinvent करना पड़ता है आपको कि भाई अच्छा चलो मैं podcast क्यों कर रही हूँ बैठी हुई यहाँ 37 years हो गए हैं काम करते हुए इस business में लेकिन I'm doing it because something new, something fresh बहुत ज़रूरी होता है बहुत ज़रूरी especially इस काम में because people have been seeing you for so long यार फ्रिया का अब क्या करें you know या फायजा का अब क्या करें so you have to keep reinventing you have to not be too proud of who you are also you have to be humble about it because अगर आप ज़्यादा pride आ गई तो आपके अंदर ग्रोथ नहीं होगी. ग्रोथ तो मेरे ख्याल में इसीलिए तो हम दूसरी चीज़ें करते हैं कहते हैं चलो इसको भी कुछ और करें और यू गो विद द टाइम्स एंड अगेन मैं उसी बात पे आ जाती हूँ वापस कि टू डू व्हाट यू आर डूइंग व्हिच आई एक्चुअली हैवंट सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग सो लेट्स टॉक अबाउट डिड यू एवर वॉच के पाकिस्तान में बैठ के आई नो कि यू वर इम्प्रेस्ड बाय whose lives is it anywhere whatever right something like whose line is it in but was it at any time
कि पाकिस्तान में we have female comedians, right? We had a lot of shows growing up. At least I did. You came much after that time. But was it anyone over here that inspired you? So I love the comedians that we have here. I Okay. think we're absolutely phenomenal. Let's tell me. Hina Appa. Oh, Hina. Bushra Appa. Hina is not an Appa for me anymore because we work together. Yeah. We mutually decided that Sitcom I'm going कर to रहे call हो her ना? Hina. Sitcom. Oh, how's that going? Sitcom का season 2 खत्म हो चुका है. We've done all the episodes. It was amazing. It was so grinding. It was so difficult to. I mean, there are so many hours that people put into TV shows. And मैं ये सोचती हूँ कि जो actors होते हैं TV के film के, वो बेचारे इतनी मेहनत लगाते हैं कि अगर flop project भी है ना, उसमें भी बहुत मेहनत जाती है. So I know कि लोग कहते हैं कि भाई हम क्या करें, अपने लिए कर रहे हैं whatever, but people really need to have a little bit more empathy because कुछ चीज़ कम भी अच्छी लगे ना, उसमें भी बहुत खून पसीना जाता है. I agree. I was thinking कि man, if nobody Patience watches भी तो चाहिए. Patience चाहिए होता है. क्या क्या working environment होता है, और चीज़ें आपकी इधर से उधर हो रही होती हैं. Like आपका you have no life apart from that TV show or film that you're doing. Film से ज़्यादा I think TV shows का जो कि सीरीज जो होती है, फिल्म तो खत्म हो जाती है ना, उसके बाद आप ब्रेक ले लेते हो. हाँ, बट मैं ये सोचती थी जब मैं बैठी हुई होती थी, बुलबुले जैसा सिटकॉम जो तभी तक 12 साल, वो आयशा उमर आई थी बता रही थी, एंड वो भी है ना दिल पसीर ही हैं, राइट? सो शी इज अमेजिंग. सो यू आर इंस्पायर्ड बाय हर. Yeah, but more when I met them. I was more inspired by them when I met them. Bushra is also cool. They're so funny in real life. They're Also, great. they are off the charts. Like they have so much energy, and they're also like they're not arrogant. That's what I also like about them. They you can connect with them and not feel like acha, this person is putting me down. Like I'm new to this, right? They could be like but they both work together with me, sort of as partners, and they've been very nice to me. They've been very supportive. But Hina ke saath to I was there with her. Like we had been together for quite a few months. And I realized कि यार she's not just a funny person, she's a nice person, she's good to be around. Oh, I love her. Yeah. मैंने फिल्म की है ना उनके साथ. हाँ. We were समदम्स. So I met her in बहावलपुर, और मैंने कहा मैं बहुत बोर होती हूँ, तुम्हें पता है 2 दिन मुझे बिठा दो. हाँ, you were such a globe trotter. हाँ, like नहीं कुछ करना है. तो फिर वो किसी ने कहा कि बहावलपुर के डेजर्ट में चलते हैं. तो मैं उनको लेके 4-5 लोगों को जिनकी शूट नहीं हो रही थी, चलो let's go. And she came with us. And we sat there, sunset देखी, समोसे खाए, ये किया वो किया. So I got hooked to her, and she came to the house also when I had a party. और मुझे फिर I realized that she's वो ज़्यादा जाती नहीं है इधर उधर बाहर में, वो ज़्यादा नहीं करती हैं. I've noticed she's not very good on social media also. She came and she's amazing. And Bushra to obviously I love also. Bushra's been there for a long time. But the energy is still, alhamdulillah, it's just unparalleled. Look at her. Yeah. We were staying together for 2 days in an apartment, just her and I. So I got to watch her very closely. And she's so like, she'll speak her mind. कपड़े भी तैयार भी अच्छी होंगी और सही भी पहनना है. पाकिस्तान आइडल की जज भी बनना है, गाने भी गाने हैं. She's a full on entertainment package. और कि ना दिल पसीर डांस अच्छा करती है. डांस अरे मुझसे हो ही नहीं रहा था. मैं अपने आप को बहुत तोप डांसर समझती थी, और वो जो क्लासिकल स्टेप्स है वो जो उन्होंने जिस तरह किए, और मैं तो स्टूपिड लग रही थी उनके साथ. And I was like looking at her like wow. We would laugh non-stop. I think, and I tell people this as well, that I did the sitcom and all the chaos that comes with doing a sitcom because of her. Had she not been in it, then I would not be that interested in television, because Frieha, television has very limited opportunities for comedians, especially female comedians. छिछोरे और सिटकॉम भी तो नहीं अच्छे बनते हैं, वो भी तो बड़ा अच्छे नहीं बनते हैं. cheap like don't thank you. cheap होते हैं. As somebody who's educated ना, वो कहते हैं, लोग समझते हैं मैं नखरे दिखाती हूँ, but it's just that मैं पढ़ी लिखी हूँ भाई, मैं ये सब चीजें नहीं बोल सकती. I can't put someone down. I can't. When I do my shows, all the girls, they know one thing. No putting anyone down. You will find it so amazing, and it doesn't happen normally. कि कोई मजाक उड़ाना गंदा वाला नहीं. तो मैं ये पूछना चाहती थी ना, अभी बहुत सारे ये टॉक शोज वगैरह होते हैं जैसे मुज़ाकरात है, और अभी आई थिंक अहमद अली भट्ट का भी एक शो था, मगर मैं तो जब गई हूँ उन शोज़ पे तो मुझे खैर आई डिडंट गो टू अहमद अली, बट आई डोंट नो अबाउट इट. बट मुज़ाकरात पे मैं तो हैरान रह गई कि वो एक बंदा जो है
वो दूसरे बंदे को कह रहा है तू जड़ा है ना तू काला है तो तू जड़ा है ना तेरा, तो मैंने कहा ये कैसे मजाक कर रहा है ना, तेरा रंग है कोले वर्गा है, तो मैंने कहा ये किस तरह का मजाक है. हाँ, एंड आई रियलाइज कि हमारे कल्चर में ये मजाक लोगों का मजाक जो है पहले फिजिकली बनाया जाता है. हाँ, कि आपके अब तो वो वाला कल्चर ख़त्म हो रहा है ना कि बाहर के मुल्क में इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी और ये सब कुछ, और वैसे भी इज़ वेरी हर्टफुल एंड पेनफुल, बट पीपल थिंक कि इस पर हर्ट नहीं होना चाहिए आपको. हाँ, यू अंडरस्टैंड, लेकिन इट इज़ हर्टफुल. ऑफ कोर्स. हाँ, और हर्टफुल के इट्स जस्ट बैड कॉमेडी. Yeah. It's just bad comedy. I'll say forget feelings also. Maybe you are a completely unempathetic. You're a completely useless person in terms of caring for others. ठीक है, I understand that, but it's poor comedy. It's not good comedy. People are laughing. I don't know. I don't think a lot of people laugh at that kind of stuff anymore. No, they do. Unfortunately. भाई अगर तक अभी तक चल रहे हैं, मुझे कोई बुरा ना कहे मुज़ाकरात वाले, बट आई एम सॉरी मगर ये हुआ था. तो उस वक्त भी हुआ था. एंड मैं सिर्फ इसकी बात नहीं करूँगी, मैं तो बोल दूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं कभी उमर शरीफ के शो में नहीं गई बिकॉज उन्होंने मुझे इतनी मरतबा बुलाया, लेकिन जब मैं उनके जोक्स सुनती थी वो इतने सेक्सिस्ट जोक्स होते थे कि वो खातून ड्राइवर होंगी या उस तरह की बातें, तो मुझे इतनी ऑफेंसिव लगती थी, क्योंकि एज अ फीमेल एक्टिविस्ट और समबडी हु स्टैंड्स अप फॉर women's rights, I just couldn't take those sexist jokes. Do you agree with me on this? Of course, I think यहाँ पे अभी भी like 30-40 साल पहले तो हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी जो कॉमेडी के नाम पे जो अजीब अजीब बातें हो रही होती है, जो कमेंट्स होते हैं, लाइक आई सेड, मैं इसलिए क्यों नहीं हर वक्त मैंने सोशल मीडिया पे पीपल आर कमेंटिंग व्हाई डोंट यू डू ड्रामास, व्हाई डोंट यू डू दिस एंड व्हाई डोंट यू डू दैट. भाई मुझे पता है ना किस टाइप की चीज़ें आ रही होती हैं. अगर कुछ मेरा खुद का कैरेक्टर छिछोरा नहीं होगा तो मेरे अराउंड कैरेक्टर छिछोरे नहीं होंगे. लिखती हूँ, थोड़े बहुत लिखती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इतना लिख सकती हूँ कि मैं पूरा सिटकॉम लिख दूँ. इसलिए कि तुम आधी कॉन्वर्सेशन तुमने अंग्रेजी में की, अगर तुम यही कॉन्वर्सेशन अब दोबारा करते हैं उर्दू के अंदर. उर्दू में मैं बहुत अच्छी करती हूँ, मेरी कंटेंट सारी उर्दू में, लेकिन ऐसे कभी कभी इमोशनल बात करना उर्दू में मुश्किल हो जाती है ना, बहुत डीप हो जाती है. आपको वो अल्फाज नहीं मिलते जो आप ढूंढ रहे होते हो. तो अच्छा, तो फिर मर्दों में कौन से पसंद थे तुम्हें? Did you like Moin Akhtar? I love him. Yeah, me too. I still watch his shows. I still watch his like. Anwar Masood. वो भी बहुत अच्छे माशाल्लाह. Like we have so much talent. But I especially like the women because I worked with the women and I've seen them firsthand. तो मुझे ज़्यादा obviously होता है Moin Akhtar साहब. I wish I would have worked with them. Like I think there would have been no bigger honor. But I'm glad कि मैं बोलती हूँ हिना को भी to her face I say to her कि I'm so happy that I got to work with a living legend because हम सोचती रह जाते हैं ना कि यार काश तो उनके साथ किया, बुशरापा के साथ थोड़ा किया. So I'm happy with that. With the male comedians I like a lot of male comedians, but with female comedians I feel I can relate to them more. Yeah, and you also feel sometimes कि जो depiction है comedians की, I feel कि जैसे कि Bollywood में भी है और Lollywood में भी, I'll have to say वो थोड़ा सा हमेशा वो कॉमेडियन को फिजिकली भी मैंने देखा है कि वो उनको थोड़ा सा कॉमेडी उनकी फिजिकल स्पेशल दिखाते हैं. हाँ, am I right? I can't name the people because मुझे नाम नहीं याद या एक्टर के नाम नहीं याद, लेकिन मुझे हमेशा ये फील हुआ है कि वो ऑब्वियसली हीरो होता है और हीरो के साथ जो उसका फ्रेंड होता है, हाँ, या उसका जो छोटा होता है जो उसके पीछे होता है, वो हमेशा मुझे वो फनी गाय होता है. Am I right? Yeah, but he is also like always like a little I don't know. I understand. Am I right? Unconventionally थोड़ा सा unconventional दिखाते हैं. ठीक है ना. So I also know, मैंने तुम्हारी बातें कुछ वो conversations सुनी हैं और तुम्हारे कुछ interviews भी देखे हैं. So उसमें तुमने ये बात कही है कि ज़्यादातर जब तुम कॉमेडी की है तुमने या लगाई है तो तुम्हें जो ट्रोलिंग होती थी, शेमिंग, बॉडी शेमिंग होती थी. तुमने खुद भी बहुत सारे कॉमेडी शोज किए हैं जिसमें आई थिंक यू पुट दैट आउट लाइक फैटी व्हाटएवर, व्हाट वाज इट कॉल्ड? Yeah, you remember that? Fatty what? For Fatties with Love. Fatties with Love. That was ages ago. You remember so that? You that did was a that show. on yourself? Was that like like I'm going to stand up and do this, and what was it? So this was I think about 5 years ago. Okay. 5 years ago. This was a show. There was a show that I was doing with my troupe, the Khawatoons. Right. But in a stand-up set, there's a set of
mine where I also talk about being a curvy woman in Pakistan, Right. someone who's a lawyer by qualification but a comedian by profession. तो उसके जो challenges वगैरह थे तो वो मैंने अपने obviously life के ऊपर ही बात की. But when I speak, Frieha, I speak for thousands of women, even men, Yeah. you know, who can't speak up for So then themselves. 5 years ago, you were speaking out on something which is now becoming A not thing. normal, but तुमने कहा ना 5 से 10% तो अब हो ही कूल हो गया गया. बात करना उसके बारे Cool हो में, गया, तो अब हाँ, कर रहे हैं हाँ, लोग. लेकिन अब कर मैंने रहे हैं. जब की थी तो इतना कूल नहीं था उस वक्त. मुझे था कि मैं बेचारी लगूंगी, बट That takes a lot of courage. I didn't want anybody to be like, oh बेचारी, you know, I hate बेचारी. I'm not a Yeah, बेचारी, but because I am not. You're not a bichari. at and- all. Never have been one. Yeah, and I think also like I also think that something like you know जैसे मैं क्या पढ़ी थी मैं I'm losing the train of thought. Okay, let me go back to it. So we were trolling. ट्रोलिंग तो ऑब्वियसली यहाँ पे एजिज्म पे भी बहुत होती है. मुझे सारा पक्का ट्रोलिंग कर रहे होते हैं. हाँ आप बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, हाँ बस आप. और वो तो तुमने कहीं ये भी कहा है कि मैं मर्दों की कॉमेडी वालों के देखती हूँ कमेंट्स, तो उनके ऊपर वो कमेंट्स नहीं हो रहे होते जो हम पे हो रहे होते हैं कि जी आपके कपड़े, आपकी की बॉडी, आपकी की लिपस्टिक, आपका मेकअप. अरे भाई So male Shallow. हाँ बस shallow. And 30 के बाद ना the woman, like you know how women are made fun of कि इनको तो बड़ा नन्ना बनने का शौक है या ये अपनी एज छुपाती हैं. कभी सोचा है क्यों कोई अपनी एज छुपाएगा? हाँ एज छुपाने में क्या है, बट क्या है? बिकॉज शेम करते हैं. बिकॉज वो आप अगर अपनी एज बताते, अच्छा ये इस उम्र में ये कर रही हैं, उस उम्र में वो कर रही हैं, अच्छा अभी भी यू नो लाइक 60 साल की उम्र में लाल कपड़े, ऐसे लाल कर लिपस्टिक लाइक यू नो ड्रेसिंग अप कवर में होना है, तो सोच ही नहीं सकते. अल्लाह का सोचो कवर में. हाँ एक तो दूसरों की हमें बड़ी फिक्र होती है कि उनका क्या होगा आखिरत में, लेकिन अपनी आखिरत की किसी ने नहीं करनी कुछ भी. सोचना कि किसी के बारे में आप बुरी बात करना, गीबत, बोतान लगाना. बोतान सेपरेट फ्रॉम गीबत. बोतान है इसके आपने किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, आपको नहीं आपके पास प्रूफ. ये लेफ्ट राइट एंड सेंटर हम करते हैं, यू नो, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन, यू नो कि ओ ये देखो कितना ये तो हराम काम कर, खुद जो कर रहे होते हैं लोग. देखो तुम्हारी उर्दू कितनी अच्छी. भूटान, मुझे नहीं पता भूटान वर्ड. भूटान तो एक मुल्क है. बोतान नहीं, मेरी उर्दू में मैंने बड़े स्केचेस बनाए इस बात पे कि लोगों को के लिए स्टेटस सिंबल है इंग्लिश में बात करना, यू नो. बट कभी कभी आपको अपना थॉट प्रोसेस वो करना, ट्रांसलेट करना उस वक्त आप जिस चीज में सोचो मुश्किल है. मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ और तुम्हें नहीं मैं सही बात बता रही हूँ कि हमारा ये है. Now that you mentioned it. But didn't you do this burger and making fun of people, na? Defense or Nazma wala kuch kiya tha? That was so that was about the dichotomy between DHA walas and Nazabadis, you know how burger and bun kebab basically. अब तो मैं कहूँगी steak यार, steak. हाँ अब तो steak भाई, वो भी saltage का. तो burger का ये था कि it was basically making fun of people who look down on others because of where they live or you know where they come from. So उस पे था. So even English के ऊपर, English का भी you mentioned it, तो एक ज़रूरी बात ये है कि हमारा status symbol है. अगर आप English नहीं बोल रहे हो तो आप जाहिल समझे जाते हो, you know, या समझते हैं लोग कि आप intelligent नहीं होंगे. तो वो बड़ा हमारा मसला है. और आप एक इतने बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं जो कि सारे आप मेसी बन सकते हैं. मेसी को नहीं अंग्रेजी आती, इनको नहीं आती, इतने नहीं आती. जर्मनी वगैरह में इफ यू गो एंड यू ट्राई टू स्पीक, फ्रांस में ज़्यादा इंग्लिश बोलोगे आपको शट अप कॉल दे देंगे. हमारे यहाँ बस है मसला. उन्होंने जानबूझ के क्रिएट किया था कि आप कमज़ोर हैं और आप कमज़ोर हैं क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो अंग्रेजी सीखेंगे, हमारे जैसे बनेंगे, इसीलिए हम वो तो में भी लगाते थे अपने ऊपर. तो ये सारा एक वो जो हैंगओवर है ना वहाँ से अभी तक चल रहा है. लेकिन आई थिंक हो सकता है कि बेहतर हो जाए. आई थिंक इट्स वेरी गुड कि आपको और लैंग्वेजेस आनी चाहिए, लेकिन अपनी जो आपकी ज़बान है, जैसे मैं खुद भी गई थी, मैं अभी रोती हूँ कभी कभी कि हमारे यू नो एक क्लास होती थी दिन में उर्दू की, बाकी सारे सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी से लेके सब अंग्रेज़ी में होते थे. क्यों भाई? अभी पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि अगर बच्चा जो है उर्दू में बोल रहा होता है तो उसको टेल ऑफ कर देते हैं, मुझे नहीं इंग्लिश में बोल लो. हाँ तो और क्या घर पे, यू नो. आई अंडरस्टैंड कि स्कूल्स वगैरह में इंग्लिश सीखना और जनरली काम आता है, वो ये नहीं कि नहीं सीखे, कोई भी लैंग्वेज सीखना इज अ गुड थिंग. बट ये कि फोर्स करना कि उर्दू नहीं इंग्लिश में बोलो, टूटी टूटी अंग्रेजी में ना बच्चा बोले जा रहा हो और एक्सेंट भी जब खराब होता है तो उसके ऊपर भी मजाक उड़ाया जाता है. भाई क्यों
आप तो बड़े, आप समझते हो कि बड़ा सेक्सी है जब वो कोई एंटोनियो बंडेरास अंग्रेजी बोल रहा है स्पेनिश की एक्सेंट में, तो वो आपको सेक्सी लग रहा होता है। पर पाकिस्तानी और इंडियन एक्सेंट खटकता है। बनाना को बनाना कह रहा होता है तो आपको अच्छा लगता है, और आप जब बेचारे आपकी कौम बोलती है तो आपको जहर लगता है, आप उसका मजाक उड़ाते हो। पर आई थिंक ये भी थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है अब। यू थिंक? नहीं, हर चीज़ हमें लग रही होती है, बस हमारी दुनिया में थोड़ी कम होती है, पर जब आप बाहर निकलते हो ना, देन यू सी कि नहीं भाई अभी भी वही हालात है, एक आम इंसान के हालात पाकिस्तान में वही है, वही बदतमीजियाँ और वही गैर अखलाकी काम चल रहा है. So going back to, okay, so we've talked about Umar Sharif, we've talked about all these. Ageism we were talking about. We were talking about when ageism तो खैर है ही है, रंग भी है, बट आपने मुझे कहा था कि मुझे आपके बारे में पता करना है भाई कि आपने ये ब्रेक 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, किस उम्र में आपने कहा कि अब मैं ये छोड़ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ? वही पहले साल में मैंने 2015 में डिसाइड छोड़ दिया था, डिसाइड कर So it's been 8 years. 8 years almost. And what was the first step? पहले माँ बाप को बताना, उनको बताना पहले तो थिएटर प्ले का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। अच्छा, कर दिया पहले तो थिएटर प्ले के लिए, क्योंकि वो ही 3-4 महीने का कमिटमेंट था, और मैं सोची थी कि भाई किस तरह से होगा, क्या होगा, करूँ नहीं करूँ, आई वाज़न्ट श्योर घर पे क्या कॉमेडी प्ले था। कॉमेडी प्ले था, वेरी गुड। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यू नो I'll just go for it. Literally I just got up and I went for it. I left my job the day I decided कि बस पैसे मिल रहे थे? नहीं, खास नहीं। सॉरी, मैं भी पूछ रही हूँ। मैं इसलिए पूछूं कि माँ बाप को बताना है जाके भाई मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं अब ये करने जा रही हूँ, कॉमेडी थिएटर करने जा रही हूँ। हाँ, तो ये जो है ना बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था, बिकॉज आई डिडंट नो उसके पैसे भी नहीं थे, पैसे हार्डली थे। टू से पीनट्स वुड आल्सो बी एन ओवरस्टेटमेंट। नहीं थे, but you did it. You but had the guts to do it. I didn't start doing this for money, and then money Yes. started happening. Money to always me. comes when you follow your passion. Yeah, so money came in later, and money was never a concern to begin with. तो वो था कि बस I just want to do what I feel like doing, and then वो बस मैं चल दी, बस लिटरली मैं उठी और मैं चल दी, और मैं चलती रह गई आज तक। तो बस ये है। And then I haven't looked back, because some people still say to me that you should be doing law में बड़ा वो है, बड़ा स्कोप है, ये लोग कहते कभी जैसे कहेंगे कि बेटा आंटी लोग, नहीं कोई भी हो सकता है, आंटी फजूल में बदनाम है, इस जब आती है ना फजूल बातों पे तो वो कोई भी कर लेता है। आंटियाँ नहीं है, अंकल भी कम नहीं है, बच्चे भी कम नहीं है, हमारा मीननेस ना जब कहीं किसी भी एज ग्रुप से आ सकती है, बट दे डोंट से इट इन अ मीन वे, टू बी ऑनेस्ट, इसलिए बोलते हैं कि रिलायबिलिटी। But what I think is you take all the meanness and make jokes about it. Yeah, it's That's content the for best me. thing about you. It's content for me. I go to some get-togethers only to gain content from them. तो अभी मुझे तुम पसंद इस है। get together से भी content उठा रही हो क्या? नहीं इससे नहीं। I would love to do a comedy. You know I love comedy. Yeah, I've done so many plays and I have no problem. You tell me to slide down the floor, look unglamorous. I don't care. Look unglamorous. I don't care. Yeah. Okay, because वो तो कर लिया ना बहुत सा. So it's true. always but even when I started, it wasn't important to me. अच्छा, The glamour wasn't important. अच्छा. Because I played a witch, I played so many things, and there was a funny witch. It was a parody. दे तो की थी ना वो वाली Hamlet किया था या क्या किया था इसमें, just Macbeth. So you were? I was a fourth witch. There is no fourth witch. वो पूरा parody ऐसी थी तो अच्छा, मजा आया तो उसमें मुझे शोर मचाना। This was theatre? Theatre, school से। कराची? School से, हाँ। उन्होंने इतनी जोर से कैकल की थी ना कि सारी दुनिया हंस पड़ी थी। मैं कहूँ, I'm good. I can do this. You know? Yeah, you've always I would love to do something with you. It will be really cool. I know, it'll be fun. You should do improv with me. हाँ, मैं करती हूँ तुम्हारे साथ. We can just do that. We're doing it right now, actually. All right, but let's get back to you first. This is all about you, not about me. So, फिर ये किया, फिर वो पहला प्ले कर दिया, फिर उसके बाद when did Khawatoons happen? Now that was a cool concept. Khawatoons happened in sorry, हाँ, बहुत ज़्यादातर लोग उसको करते हैं. It's an amalgamation of Khawateen, and it's an amalgamation of two words. Khawateen and cartoon, yeah. Cartoon. अच्छा ना, अगर तुमने ना बताया तो मुझे कभी ना पता नहीं है, cartoon और Khawateen का वो है, mix है. And you have all these girls जो कि अलग अलग शोबों से, कोई पता नहीं, मैं पढ़ रही थी बैंकर है, कोई स्टूडेंट है, वो कहाँ से ढूंढ के लाई, वो खुद ही आई तुम्हारे पास? कैसे खींच के लेके आई मैं.
लिटरली सड़क पे निकल गई थी ढूंढने के लिए. Really? I- जो वो वैसे सड़क पे मिली है मुझे. मॉडल्स को ढूंढती थी हाँ. जहाज पे बैठे हुए, आप मॉडलिंग करेंगी? हाँ, you know कि वो आपको बहुत ढूंढना talent, पड़ता है, talent, स्पेशली कॉमेडी के लिए तो बिल्कुल ही मतलब, बिकॉज इवन इफ यू वांट टू, a lot of women if they want to be in the media, they want to be models or actors, या कोई ऐसी चीज़ ना, कॉमेडियन तो कम ही लोगों की ख्वाहिश होती है बनना. तो बड़ा मुश्किल से मुझे मिली थी, और अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, और अलग अलग टाइप की. लेकिन जब हम साथ आते हैं ना, इट्स लाइक वी क्रिएट मैजिक. आई एम नॉट एग्जैक्ट, आई वुड नॉट से दैट अबाउट एनीथिंग एल्स दैट आई डू, बट विद माई इम्प्रोव आई रियली फील लाइक यू हैव टू वॉच इट लाइव. और ऐसे नहीं हो सकता कि बस एमी रैंडम. तुमने मुझे बुलाया था ना, मैं एक दैट वाज लाइक आई थिंक एजेस अगो. बहुत एजेस अगो जब शुरू हुआ था, शायद 2017 18. फैसिनेट हो गई थी कि ये कौन है, कहाँ से आई है, किधर से आई है. एंड देन द सेकंड कॉल आई मेड टू यू, जो तुम मुझे बता रही थी कि तुम यहाँ आई थी, वाज फॉर लक्स स्टाइल अवार्ड. Yes, I remember. Because I said we have to have a female comedian in the show, and it's very important कि you know उनको रखा जाए. So I think also for me, I'm always looking for talent. Yeah. You know, just like you are seeking people out, I'm also seeking people out. Of course, you have you're the kingmaker. Yeah, well, not really. No. Well, yeah. You have brought in a lot of people. Yes, but I think also with me, ये था कि I can see it. Okay. Sometimes you can spot it, and it's not just कि मुझे उसमें models में नजर आती हैं, जैसे कि यासिर है. I saw him in the play Angan Tera. And that's when I went up to him and I said, you have to be in. I called him. I found his number. I called him कि तुमने करना है. Yeah. और उस वक्त मुझे लोग कहने ना सारे कि ये कौन है, बंदा कौन है, किसी को जानता नहीं. मैंने कहा क्या है, आई नो कि जो थिएटर कर लेता है ना, वो होस्टिंग भी कर लेता है. That is true. और वो फनी भी हो सकता है, उसको कोई परवाह नहीं होती. एंड सेम वे आई थिंक अहमद अली बट विद फॉर मी, because I knew him when he was part of EP. Okay. Because I did the first Battle of the Bands की PR. हाँ. तो उस पे मैंने उसको देखा था, वो रैपर था ये वो. And then when he came to, मैंने उसको वो बनाया था, क्या कहते, प्रेजेंटर. So I put him with Meera, and I sent him with Meera, and he was so funny. Yeah. I said, यार, he's got something. हाँ. तो मैंने उसको दूसरे साल, अगले साल उसको मैंने होस्ट बना दिया. So I think, I can see talent, I can pick up on it, and I think that's very important also. It's so much exciting to find people. Yeah, but I think मेरे लिए थोड़ा इस तरह से हो गया था, because मुझे बड़ा ढूंढ के, बड़ा कन्विंस करके, और फिर ये भी होता था बीच में कोई कहता था यार हमसे नहीं हो रहा, we want to leave, and I had already trained them for like 2 years, 3 years, and they'd be like यार हमसे नहीं हो रहा, and I'm like that's a lot of time invested in. Contract नहीं sign किया, वो फिर contract lawyer में मैडम contract ऐसे sign हुए हैं कि वो बोलते भाई इसका करेंगे क्या हम, but contract sign किए हुए, contracts हैं, but obviously मैं किसी को कोर्ट तो नहीं लेके जाऊंगी ना, जिसका दिल नहीं होगा तो वो परफॉर्म भी नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, उसको जबरदस्ती तो कॉमेडी आप किसी से नहीं करवा सकते. तो उनको लेकिन मैं कन्विंस करती थी. और ऐसे ऐसे लोग हैं जो 3 साल 2 साल में छोड़ना चाह रहे थे, और आज 7 साल हो गए और है ट्रूप में. तो this still happening, this Khawatoons, it's difficult. It's Khawatoons and Khawatoons together, Khawateen and which I got it Khawatoons. So it's still there. Yes, we're performing. Oh really? On the 26th of May. Oh nice. Where? Club 432. वो क्या है? जमजमा में एक बेसमेंट sort of. Yeah, तो हमेशा ऐसी जगह ढूंढती हो. यही है. PACC में अभी किया था. But यही है. Limited options है to do improv comedy, because there has to be an enclosed space. District 18, 19. District 19 पे बहुत ज़्यादा होते हैं. District पे भी बहुत होते हैं shows हमारे. Very good. Okay, great. And अच्छा, अब तो बीच में कहानी भूल गए. हाँ, वो Khawatoons का you were asking me, so वो मैं अलग अलग जगह से लेके आई, फिर उनको ट्रेन किया, फिर उनको बड़ा वो करती हूँ, इनकरेज करती हूँ, बहुत उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, टीम बिल्डिंग पे बहुत काम. सो अल्हम्दुलिल्लाह Frieha, we've never had fights, we don't blame each other if a show goes down. माशाल्लाह touch wood. हाँ, लोग कहते हैं ना कि औरतें जो बदनाम है कि साथ होती हैं तो कुछ मसला तो होगा. Not at all. We are very close. We're great friends. We travel together. हमें काम के अलावा भी मिलने का बहुत शौक है. So we have built that environment कि जहाँ पे comparative नहीं होते, competent ज़रूर होते हैं, but not comparative with each other. हाँ, बड़ा important होता है ये करना कि टीम के अंदर आपस में rivalry नहीं हो, आपस में trust करें. That's really important. But the thing is, तुम लीडर तो तुम ही हो ना, तो अगर थोड़ी कभी जेलसियाँ भी हो जिसको ज़्यादा अटेंशन मिले, पर एक लीडर तो होता ही है. लीडर तो लेकिन वो शुरू से ही होना चाहिए. आई फील प्रॉब्लम आती है जब लीडरशिप में चेंजेस होते हैं, जो कि इम्प्रोव ट्रूप्स में हो जाते हैं कभी कभी. अच्छा ये लीडर था, अच्छा इसको बना दिया. एक प्रोफेशनली लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है. So now
लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट थोड़ा सा रिवर्स में जाते हैं और फिर बात करते हैं कि फाइजा ग्रोइंग अप, व्हाट वाज योर फर्स्ट क्रश? टेल मी. That best friend that I bullied. हाँ, That was my first crush. उसको उसी बुली करी, इसीलिए बुली कर रही थी. हाँ, वो तो वैसे ही भाग रहा है, वो भागेगा तब से उसको फिर क्रश है तो उसको बुली भी कर रही थी. बाद में क्रश होना जब अफसोस हुआ मुझे अपने अच्छा, फिर तो उसने माफ किया. एक वो भी फेज आया था, बहुत बता रही हूँ ना कि when you realize if you're not a completely horrible person, you realize कि यार ये नहीं करना चाहिए लाइफ में, ये बुरी चीज़ है. तो वो फेज भी आया था, तो वो फिर वो जो कि जिंदगी भर चला. तुम्हें अच्छा लगने लगा? क्यूट लगने लगा. क्यूट. हाँ, वो बहुत अच्छा नहीं लगा. मेरी बेस्ट फ्रेंड दूसरी वाली थी ना, उसको भी बहुत पसंद है, तो हम दोनों we were okay with that. No, we were both okay with that. जिसको मिल जाए. किसी को चाहिए भी नहीं था. क्लास 3 में थे. क्लास 3. क्लास ओके, उसके बाद चाहिए किसी को नहीं था, लेकिन क्लास 3 में बुलिंग, दैट्स ओके. अब उसके हाँ, बाद बिल्कुल बचपन की बात बिल्कुल बता रही तो हूँ. बिल्कुल ही यंग एज होती है. उसके बाद क्रशेस वगैरह तो कम ही हुए. फिर रिलेशनशिप्स नहीं. She's looking at she's a freaking stand-up comedian. And are you stand-up comedian? Yeah, I'm a stand-up comedian. अभी हम यही बात करते हैं. I do stand-up, but I do improv more than stand-up. But वो सारी चीजें stand-up के ambit में आ जाती हैं. And she stands up for body shaming, and she stands up for ageism and colorism and all of that, and yet she doesn't want to talk to me about her relationships. बस my relationship is my शादी. हाँ, तो वो ही बताओ. वो भी सुना है बड़ी मुश्किल से. हाँ, तो मानियो, सुना है कि वो भाग रहा था तुम्हारे पीछे. Is it true? नहीं, भाग नहीं रहा था, लेकिन I think it came as a surprise to both of us. And he's always been the one who said कि नहीं, we'll make it work till the very end. Friends थे पहले. Best friends थे. Best friends बने. Then थोड़ी बहुत पसंद आने लगा. फिर उसके बाद मंगनी कर ली. I jumped to मंगनी. नहीं, और फिर तुमने स्नीकर्स पहने हुए तो भागने वाली थी शादी से. हाँ, मैं असल प्लान ये था. Guys, मैं गई थी शादी में. She knew के यही प्लान है. तो भाग जाएगी, तो runaway bride है. और सुना तुमने अपनी रोस्ट भी करवाई थी, सुना. हाँ, मैंने रोस्ट करा. How do you does that, man? Oh, you were there at the roast. I was there, not on the. I think I was there on the शादी. You were there on the शादी, but I must have told you about the roast. Yeah. So yeah, I got roasted pretty well. Yeah. My friends. Was that your idea? It was my idea to get roasted on my शादी. वो शादी पर dances नहीं हो रहे थे? वो भी हुए. So we did a separate comedy night where I also performed at my शादी की comedy night. I performed with my troupe and my friends who were also comedians. Yeah. They made fun of me and I enjoyed it. So मेहंदी के जोड़े में? नहीं, वो अलग से थी. वो अलग था. The मेहंदी was separate. Guys, she's organizing the next weddings for me. I love this idea. Yeah. I come up with lots of fun things. You can't sit and stage perpetual. बोरिंग होता है ना, मैं stage perpetual. और वो कितनी देर देखेंगे. सलामियाँ जमा कर, हाँ, और यूं करके झुके हुए और सब आंटियों के साथ तस्वीरें खिंचा. But पता है फ्रिया, एक चीज important है. A lot of times people ask us to perform at weddings, लेकिन weddings के ऊपर ना perform करना is not a great idea because people are busy like looking at each other's जोड़ास and talking to each other about the शादी and शादी का खाना. उनको रोस्ट करो ना, तो उनको अलग से लेकिन होना चाहिए. एक कॉमेडी नाइट अलग से होनी चाहिए where people it was completely like a संगीत just separate from the other events. तो इसी तरह की कॉमेडी नाइट where people know they're coming in. People used to do this, हाँ फायजा, जब एक वैरायटी शोज होते थे शादियों के से पहले, उसमें सिंगर्स आते थे, बीच में आते थे, कॉमेडी होती थी, उसके बाद फिर से सिंगर्स आते थे. I remember this. I think मेरी बहन की शादी पे भी ऐसा कोई फंक्शन हुआ था जरूर. I know that. And we used to call them variety shows. Variety shows. Okay. And then people started thinking variety shows are cheap. Okay. Comedy में यही बड़ी fine line तो होती है ना. Yeah. So I think, but it depends on the exactly कि quality क्या है. Quality क्या है. अब आप क्या आतिफ असलम को बुला रहे हो या आप I'm not gonna take names. हाँ, मैं समझ गई. You know what I mean? किसी छोटे सिंगर को बुला रहे हो. Depends ना. छोटा is also not the problem. I think caliber देखना मतलब because बच्चे भी हैं, बड़े एज के भी लोग होते हैं. You can't get away with like vulgar. No, but वो dances भी होते थे ना बीच में. हाँ, तो वो अच्छा है, वो अच्छा. लेकिन I think अभी लोगों के अंदर इतना attention span नहीं है कि वो पूरा comedy show देखें. खुद dances होते. अब खुद डांस करने उस जमाने में तो लड़कियां को allow नहीं था ढोल बजा के. सिर्फ आप ढोल बजा के गाने गाने. No, करते थे लोग, डांस नहीं करते थे. अच्छा, there was no dances. No, I mean होते थे but segregated. लुडियाँ होती थी. Okay, nobody was doing like this full Umrao John thing or whatever, this Bollywood thing. No one did that. You were quite ahead of your time. Who, me? Yeah. Why? Did you see me dancing somewhere? No.
No, I did. I see you The only thing I dancing. did was Mor To Tille Dana. That's a folk dance, यार. No, I'm not saying I saw. मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हें असली बात बता रही हूँ कि मैं जब कह रही हूँ ना कि मैं जब दीना दिल पसीर के साथ compete नहीं कर सकती थी, because I had no training. The only thing I'd seen is people dancing and stuff, and then you would do this more तो टिलने डाना type thing, और बस ये कर सकती थी. I mean, अच्छी घराने की लड़कियाँ जो थीं वो सिर्फ ये कर सकती थी. That I remember, but I'm saying like you were ahead of your time, right? Like the clothes that you wore, you were always so stylish, you were always so on point. So how did you get उस time अब करना, अब भी करना, like some of the pictures that I see, they're super hard. I think अब भी कोई करे तो लोगों को मसला अब ज़्यादा मसला है. अच्छा अब ज़्यादा ही you think? अच्छा उस टाइम पे कम था. क्योंकि उस ज़माने में अगर मैं अपने ज़माने से भी पिछले ज़माने पे चली जाऊँ, जैसे कि my parents supposing when they got married and they were young, तो उनके ज़माने में तो माहीन मुझे बताती हैं, she was a model in the 60s, right? Yeah. So they used to cycle to Clifton in shorts. Yeah. And you had a huge foreign community that was left over आफ्टर पार्टीशन के बाद. बहुत सारे रह गए थे गोरे पीछे, क्लब्स वगैरह जो आपकी जिमखाना और ये सारे जो क्लब्स हैं आपके, और उसके साथ फिर आपकी कैबरे नाइट्स होती थी यहाँ पे, और टर्किश परफॉर्मर्स आते थे, एंड यू वुड हैव फुल फ्लेज्ड स्टफ गोइंग ऑन, एंड इट वाज वेरी कूल. इट वाज टुवर्ड्स आई थिंक ज़ियाउल हक के एरा के बाद से I started seeing the change in Pakistan, because Pakistan started getting very conservative, and it wasn't that. Now, obviously मैं तो ज़ियाउल हक के ज़माने में आई थी, तो I think हमारा जो ज़माना था फैशन और जो बॉय बैंड्स और जिनके साथ मैंने काम किया है ना, like Vital Signs और जुनून और सब, we were rebelling. We were definitely rebelling against that whole regime and people stopping us from doing whatever we were doing. So I think that was our era. But before that, the Bhutto's time, before Bhutto's like assassination time, it was very cool. It wasn't like the way it is. That's what I've heard. Yeah. First hand सुनना. I mean, I'm saying it's cool. People might not think it's cool. लेकिन मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि पाकिस्तान में बहुत चेंज आया, और बहुत लोग इस तरह नहीं सोचते थे जिस तरह अब सोचते हैं. So it's tougher now. I think it's tougher in certain ways. Obviously, उस ज़माने में ये भी होता था कि baby boomers and all, everybody was married before 20. ये भी होता था. Right? Yeah. कि आपकी certain उम्र से पहले आपकी शादी हो जानी चाहिए. Right? बिल्कुल. You're straight out of teenage, before in your teens. Okay? And it was considered normal कि आपकी 13, my sister got a रिश्ता in 13 years of age. हाँ, चिट्टी गोरी थी, blue eyes थी, सबको अपनी नस्ल से ही करनी होती है. This is what it is, right? Yeah. This is what it is, right? Yeah. This is how they look. I mean, I was the black sheep of the family, right? Yeah. I mean, sister was gori chitti with blue eyes, so you start rebelling from that age, young age. Yeah. But this is not about you. You're doing this on purpose. She's turning me away from the I did a little bit of charaki there. little romantic interlude with the husband. Yeah. No, so what was... So then it evolved. I think the friendship evolved into love, and I think it keeps evolving into deeper love with time. Right, yeah. If you understand each other. I'm very open with communication. तो मुझे जो चाहिए होता है लाइफ से मैं बता देती हूँ. जो नहीं चाहिए होता. He's chill. He loves you for who you are. Yeah, Best friends. Every phase. I've been through so many phases in my life. Yeah. I'm like that as a person. I have a lot of phases. I mean, come on. You would run over. You would never marry somebody जो होगा मेरी तो शादी में मुझे रोस्ट होगा, मेरी शादी में मैंने स्नीकर पहनने हैं. Mother-in-law school also कि वो भी सब चल रहा है. My mother-in-law is very nice. Like वो खुद भी पता है कि वो खुद भी modern है. उनकी खुद की अपनी life है. She has a nice balanced life. Socialize करती हैं, walk भी करती हैं अपनी, अपना fitness का भी ख्याल रखती हैं. She's busy with her life, so she doesn't meddle in mine. तो वो बहुत important चीज़ होती है. So वो लेकिन मैं देख के की थी शादी. Of course. तुम तो हर चीज़ देख के करती भाई. तुम तो बहुत brave and बहुत sorted लड़की हो. मुझे ये भी बताओ ना कि obviously you've talked about body shaming, और खुद तुमने उसके ऊपर चीज़ें की हुई हैं. And so when you were growing up, were you always like curvy, or were you always like a... Fluctuate. I always fluctuated. So you will see pictures of me and I'll be different sizes and different... Did it ever affect you mentally, or... To be honest... Did people make fun of you? The kids yeah. bullying So you? that's how the bullying started. When I used to be bullied in kindergarten, I'd get really upset. I'd come home crying, and I wasn't like I wasn't
obese. I was a regular chubby kid. Yeah. Like, it wasn't like alarming. Parents should like. I understand कि वो health concern जब बन जाता है. It was not a health concern. It was just a kid who was not like other kids as such. But I would get bullied in school. Right. So from a young age, it was something that I knew was a problem for people, So I always struggled, kabhi zyada, kabhi kam, and then I'd come home when I was a kid. I'd come home and I'd start crying, and I remember my family would do different things to cheer me up. Sweet. I still remember my eldest sister Kiran. She made a sun for. I was crying, I was weeping, and she made a sun for me, and she helped me make a sun, and that cheered me up. Bड़ी basic होती है happiness. तो वो नहीं, so it was stressful sometimes to go to school. कि कोई मुझे याद है एक बच्चा मेरी पेंसिल लेके मेरे पीछे भाग रहा था. हैं क्यों? बस ऐसी bully करने में, just like that, People don't know how mean children can become, and people don't understand कि उनको बचपन से समझाना है कि एम्पैथी क्या है, अच्छा इंसान कैसे बनाना है अपने बच्चों को. ये बच्चों उनको ये इसी से बिजी होते हैं ना कि अंग्रेजी सीख जाएं और अच्छी स्कूल में पढ़ लें और सारे होइटी स्कूल में आई एम बेटर देन यू. हाँ, कि बस compete करें, because also the parents उनकी बातें ये कह रहे हैं ना. घर पे भी ऐसी बातें बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए. Like I told you, मेरे पेरेंट्स ऐसी पक्की बातें हमारे सामने नहीं करते थे. They would not discuss financial affairs. ना हमारे घर में पैसा का कुछ नहीं होता था, ना हमने दूसरों का सुना. हाँ, ऐसी पक्की बातें, फजूल बातें जो बच्चों को नहीं. तो my mother and my father they'd make sure कि हमारे सामने कोई अजीब सी बातें ना करो. But parents they often don't realize कि जो घर में बातें कर रहे हो बच्चा अपने और दूसरे एनवायरनमेंट में बच्चा वैसे भी फील करता है डिफरेंस जो होता है. आप आई नो कि जब हम बचपन में छोटे थे तो हम अगर किसी के बड़े घर में चले जाते थे तो हमें फील होता था कि अभी हम इम्प्रेस हो जाते थे. हम गार्डन ही देख लेते थे. गार्डन इतना बड़ा है कि उस ज़माने में तो ये कंप्यूटर कुछ नहीं होता था. हमें तो बाहर खेलना होता था, राइट. सो वी यूज्ड टू लुक एट दैट एंड बी लाइक, ओ माय गॉड, आई विश वी हैड अ गार्डन, राइट. वो दिमाग में आती हैं बातें, राइट. तो फिर उससे आपको एहसास कमतरी होती है कि भाई वी डोंट हैव एनफ और व्हाटएवर. ओके, वी आर फ्रॉम अ गुड हाउस होल्ड, एंड फिर आप अपने शो ऑफ भी करते हो. चीज़ें शो ऑफ भी करते हैं, राइट. हाँ, कि मेरे पास ये है, मेरे पास मेरा बाप जहाज उड़ाते हैं. It's true, but very specific. Yeah, right. I'm being serious, right? Yeah. Okay. नहीं, और चलो वो भी सही है क्योंकि ऐसा तो होगा ना लाइफ वाला. बट कॉन्फिडेंस आप बच्चों का अगर आप कॉन्स्टेंटली मनी माइंडेड, मुझे ज्यादा इसका होता है कि मनी माइंडेड या लोगों के बारे में बातें करने वाला, तो ये जो बुलिंग होती है ना बचपन से शुरू होती है. पेरेंट्स ऑब्लिवियस होते हैं, उनको नहीं पता था बच्चा स्कूल में. हमारा तो बच्चा मासूम है. सबको आई कांट बिलीव, आई एम लाइक विजुअल आ रहे हैं मेरे दिमाग में. दिस बच्चा इज KG2. This is KG2, kindergarten. Can you imagine? So no one would imagine that their kid is running around with violence at home coming through. Exactly. Right? तो वो वहाँ से कहानी शुरू हुई. फिर जो है वो बाद में भी different parts of my life, like I've had like a very good alhamdulillah life in terms of everything. I can see that the confidence in you. I've had a good life, but ये सब चीजें like core memory मेरी. This kid running. करती होगी ना? अब इतनी नहीं करती है. I think बचपन में when I was very young, I'd get a bit scared, to be honest, scared for myself, but not कि मुझे bother करती थी कि I would feel lesser than anybody because my parents made sure that I didn't feel. That's amazing. Not arrogant, not cocky, but also like have self-belief, happy child. So my parents were very nurturing. My family was very nurturing. अभी भी बहुत encourage करते हैं. अभी भी बहुत Faiza है. So for me like I've always been like a star. मैं अपने घर की star हूँ. My friends also treat me like that. So I've always been very lucky in terms of the people that I've met. और हाँ, छोटी मोटी चीज़ें ना, असल में फ्रिया ये चीज़ें बड़ी होती अगर मेरी बाकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती. But because I made sure and I've also been lucky कि मेरी बाकी ज़िंदगी अच्छी है, तो मुझे ये छोटे मोटे मुझे होता है कि यार अगर ये मुझे मेरा कोई ट्रोल मजाक उड़ा रहा है या मुझे पुट डाउन कर रहा है, इसकी खुद की क्या ज़िंदगी होगी यार. ये बैठा इसका इसकी मेरी लाइफ होगी. इसको CNN इसको कवर किया होगा, नहीं किया होगा. You're like what? Social media? Trailblazer, different things. Yeah. Good. Trailblazer. I agree. I feel like अच्छी होती तो फिर वो मेरे पीछे तो ना पड़ता ना. मेरी अच्छी है इसलिए पढ़ रहा है, तो जाने दो. तो कोई फॉरेन खातून है जो तुम्हें अच्छी लगती हैं? फॉरेन खातून who was a comedian?
Foreign Khatoon, I like a lot of them, but ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि Comedy, stand-up I wouldn't say I like Ali Wong a lot these days. I have different phases where I Right, like okay. different stand-up comics and comedians. Melissa McCarthy I like a lot. I just find her to be like, the entire like Yeah. whole persona I think is great. Yeah. Personality बहुत जबरदस्त हाँ, है. so I like हमारे I ज़माने like में her तो craft. लूस हाँ who? I like her craft as well. Yeah. There are a lot of comedians, but ऐसे मेरे लिए ना ज़्यादा important जो inspirational मेरे लिए होता है वो तब होता है कि when I know them personally and I like something about them as a person. For example, यासिर जो है के बारे में सबसे ज़्यादा more like you notice his talent. I saw him first in Angan Theatre as well. You also saw him there, Yes, and I अच्छा. was like phenomenal. I remember Yeah. thinking that's like a true theatre actor. Yeah. So वो सब चीज़ें अलग, but the way that he comes in and meets the crew and everybody else, I think for me that stands out. उसकी comedy, उसका बाकी सब कुछ, उसकी success irrelevant हो जाती है, but when I see somebody कि अच्छा उनको सब कुछ मिला और या बहुत कुछ मिला और वो फिर भी they're nice to people whom they don't have to be nice And to. he's so nice to his wife. My Yeah. God, and They- women, he stands up for women. Yeah. They've stood up for me as well, by the way. I was I'm getting sure. trolled Yeah. for one of my campaigns, fashion campaigns. हाँ, and वो they भी stood up सुना for me. है They मैंने. didn't have to do Lulu that. sir. Lulu sir. Yeah. वो first campaign थी, तो Yeah. उसमें हुआ था, थोड़ी trolling हुई थी. तो but they stood up for me. I wasn't expecting I'm so it. glad But for me, also that that stands out. Lulu sir stood up for you. That also in itself is progress for me. कि ठीक है, people have started. I've seen now Sana Safi now has this campaign with plus size model. I think जो अभी चल रही है इस वक्त. Yeah. I'm seeing people Even getting Nishat also. is stepping up. Yeah. A lot of brands are stepping up now. But एक चीज़ है कि I would want कि one off ना हो. It shouldn't be, oh look, we're so great. We've taken a plus size person on board. I think Generation is the first one to start. all Yeah, of I this, think I love Generation has always been Khatija. very authentic and Fantastic. She very had this real. old woman getting married at an Yeah. old age and everybody was like, ये क्या हो रहा है क्यों अरे भाई क्या करे भाई कोई किसी का मियाँ मर जाए तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती हाँ Yeah. come on you was it even in our religion you were supposed to marry the widows you were supposed to do all of this कल्चर ने एक्चुअली नहीं, टेक ओवर कर पता लिया नहीं ना क्या जो कल्चर stupid. कुछ सर्टेन लोगों को सूट करता है उस कल्चर Bollywood को बना culture दिया maybe something that we've also gotten from the other side Yeah. because wearing white after your husband dies is not this but your life is finished is not maybe even not in their culture but ये चीज़ें आ जाती हैं कहीं ना कहीं से किसी और रिलीजन कहीं से घुस जाती हैं और वो ख़राब कर देती हैं चीज़ों को so yeah I think that was a very good campaign that you did and I think you are actually could be a trailblazer flag bearer for a lot of things Faiza ये मजाक नहीं है I mean you have to give yourself credit I know you're humble and everything but एक अपने because मैं बताती हूँ क्यों okay मैं बहुत सारे लोगों को interview there are lots of actors there are lots of models there's lots of politicians there's lots of everything right but female comedian बहुत कम है there are very few and if for somebody to get up leave that job and say कि मैं ये करूँगी and it's not about the money and to stand up to criticism first of all you are introducing एक नया profession ठीक है into the market तो वो जो ट्रेल ब्लेजर वही होता है बंदा जो कि एक चीज़ को उठाता है उसको एक प्रोफेशन बनाता है और बहुत सारी लड़कियां आगे हैं जो बैठी हुई हैं who will also get inspired by you by understanding कि भाई ये भी मैं कर सकती हूँ और इसको देखो हाँ ये कमा रही है इसका मियाँ अच्छा है ये स्नीकर्स पहनती है अपनी शादी पे इसको CNN ने ये and she's happy and she's not ashamed of her body she's owning it and she owns all the other crap that happens also in society all the social injustices or whatever they are जो गलत चीज़ें हैं वो भी उसके बारे में भी बात करती है expresses that through her art okay ये बहुत बड़ी बात है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है so for me you are extremely important as a person in this society who's come in and to do this and for you to go find and nourish the talent from into other and give them confidence so you have to keep doing this and you have to do more I'm sure you will end up doing more but I'm sure what Faiza will end up doing is making a lot of people laugh it's why like you did for me today and I'm just so happy I could go on and on with this conversation am I missing anything guys with TCF
Yeah, let's talk about that. So, okay, वो तो तुम कर रही हो through your art. तुम अपनी ये सारे जो उल्टी सीधी injustices होते हैं हमारी सोसाइटी में, गंदे बदबूदार चीज़ें जो निकाल के तुम लेके आ रही हो उनको खुशबूदार कर देती हो, और मगर और भी चीज़ें करी. मैंने doing a lot of work with social work. उनके बारे में बताओ. Which one do you? I mean, there's a lot. So TCF is very close to my heart. Okay. And I tell people this quite often कि जब TCF में किसी से मिलती हूँ मैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई डोनर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, आई एम ऑलवेज टच बाय देयर स्टोरीज. ऐसा नहीं होता कि मैं TCF से किसी को मिलूँ और मेरे आँख में आंसू ना आ जाए, बिकॉज इट्स चेंज. TCF has changed lives, and for me to even be like a very small part of it, it's an honor. And जब मेरी पहली कैंपेन हुई थी ना, तो मैं अपनी फ्रेंड को मैंने बोला था कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये जब ये फंड्स हमारे पास आ जाएंगे, तो आई थिंक इट बी कंसिडर्ड, आई विल कंसिडर इट अ ह्यूज माइलस्टोन इन माय लाइफ. यू नो कि एक स्कूल सेटअप करने में हेल्प की, क्लासरूम सेटअप करने में हेल्प की, जस्ट टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस आल्सो, व्हिच इज सो ग्रेट. कितनी जिंदगियां बिल्कुल बदल जाती हैं एजुकेशन ने सब कुछ जो है वो पाकिस्तान में जितनी भी हमारे मसले हैं ना, जो जहालत है, जो अंदरूनी जहालत है, जो एवरीथिंग, एम्पैथी की जो मैं बार बार बात करती हूँ, एजुकेशन से टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो आ सकती है. हम अपने करिकुलम में भी अगर ये बात ये एज अ सब्जेक्ट एम्पैथी का इंट्रोड्यूस करें, आई थिंक दैट्स गोइंग टू चेंज so many things for us. But TCF जो है वो इतना इनक्रेडिबल काम कर रहा है, वो इतने सेल्फलेस लोग हैं ना, कि आप सोचते हो कि यार अब पैसा कमाओ तब भी आप उसको अच्छी जगह लगा सकते हो, अब नहीं भी कमाओ जितना है, लाइक यू कैन ऑलवेज डू समथिंग फॉर समवन एल्स. वो चाहे आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो, नहीं हो, देयर आर पीपल हु आर लोडेड, उन्होंने अपने सारा जो है वो सब कुछ दे दिया है, रियली, जस्ट टू to help out strangers, right? Those are amazing people, right? Those are true heroes, real role models that children should look up to, that adults should look up to. वो आते नहीं है ना सामने, इतना नहीं शो का पार्ट इतना नहीं होता है. बड़े उम्दा लोग, बहुत उम्दा लोग हैं जो ज़्यादा शो ऑफ कर रहे होते हैं, नहीं करते, उनका मकसद ही और होता है. हाँ, जैसे उनकी सेल्फ प्रमोशन हो रही है कि भाई बैग जो है, मुझे भी शौक है अच्छे बैग्स का, बट उन्होंने कहा एक ने कि भाई बैग तो चाहे नॉर्मल बैग हो, 500 रुपये का बैग हो, 1000 रुपये का बैग हो, पता नहीं 1000 रुपये के आते भी कि नहीं, लेकिन या LV का बैग हो, बैग आ जाएगा. मैं भी सोचने बैठ गई कि आ जाएगा. अरे वो जो पोतली नहीं होती जिसके सॉफ्ट सुपर, मतलब चलो 2000 का 1500 का बैग और LV के बैग में क्या फर्क है, बस वो है ना कि one says average and one doesn't, but they're okay with that. उनको नहीं है कि भाई हम पैसे हैं तो दिखाएं, उनको है कि वो किसी की मदद करें. सो इस तरह के लोगों से जब मैं मिलती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार हमारी ना बड़ी छोटी सी दुनिया, बड़ी पेटी से मसले हैं, और जब आप बाकी किसी को हेल्प करने निकलो तो आप अपने आप को पीछे छोड़ देते हो, पर आपकी प्रॉब्लम्स वो कोई मायने नहीं रखती. I think that's very important again. So what's next, फ़ायज़ा, क्या हो रहा है? बस अब देखते हैं कि सिटकॉम का क्या होता है. तीसरा सीजन होता है कि जा कैसा रहा है ना, पहले यहाँ पे तो अच्छा जा रहा है, लेकिन आज टीवी पे अच्छा जा रहा है, बट आई थिंक वो पिकअप जब करता है एंड कैरेक्टर्स नए जब ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं, जब मल्टीपल सीजन हो जाते हैं, आई थिंक नाउ, बिकॉज अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों ने 2 सेकंड देखना बंद कर देना है, बट टू गेट पीपल सो इन्वेस्टेड कि वो 40 मिनट्स का देखें, 30 मिनट्स का देखें सिटकॉम, आई थिंक लोग लगाते हैं सोशल मीडिया पे, थोड़ा बहुत लगाते हैं, ज़्यादा आप नहीं लगाते? मैं कम लगाती हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे मैं कभी कभी टीवी की चीज़ें या फिल्म की जैसे मेरी चीज़ें होती हैं, मैं हार्डली लगाती हूँ. आई डोंट नो, पता भी नहीं तुम पर्ची में भी थी, मैं नहीं बताती. क्यों नहीं बताती? बस पता नहीं, मुझे होता है कि वो अलग है. इवन खवाटून्स के बारे में भी अब मैंने जाके सोशल मीडिया पे अपने बायो में लिखा है कि अब आई कीप, अच्छा कुछ चीज़ों में तो मैं एजुकेट डाइकोटमी रखती हूँ. TCF एम्बेसडर, यू हैव टू पुट ऑल दीज थिंग्स डाउन, और आई थिंक बिकॉज जब आप नहीं लगाते ना, तो उसका मतलब है यू आर नॉट हैप्पी विद इट. नो मुझे होता है कि अच्छा ये पहले लगा दूं, स्केचेस पहले लगा दूं, रील्स पहले लगा दूं, बहुत सारी चीजें रह भी जाती है. फ्रीहा, टू बी ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स यार, इतने पोस्ट होते हैं, मैं भी मर जाती हूँ, कौन सी स्टोरीज पे लगाती हूँ, कितने ही लगाऊं. हां, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू पोस्ट, यू नो दैट. हां, और समझ नहीं आता क्या लगाएं क्या ना लगाएं, तो स्टोरीज पे काफी है. अच्छा FWhy लगाएगी कोलैबोरेट, डिपेंड करते कि मेरे कितने सीक्रेट्स आउट हो रहे हैं. अरे कोई सीक्रेट तुम्हारा है ही नहीं, तुम खुद ही आउट कर देती हो वहाँ खड़े होके. हाँ, दैट्स ट्रू. Am I right? कोई बात मेरे तक अपनी नहीं रहती. हाँ, मगर सीक्रेट्स, आई थिंक ये इंटरव्यू सीक्रेट्स के लिए नहीं है. ये हम जब करते हैं ना पॉडकास्ट, हम एम्पावरमेंट के लिए करते हैं, हम इंस्पिरेशन के लिए करते हैं. और अगर आपका
आई नो कि मे बी यू आर अनकम्फर्टेबल, दुख भी हो ना, दुख के अंदर से जो चीज़ निकलती है ना वो बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं और उससे आप स्ट्रेंथ भी गेन करते हो जो भी आपकी पेन्स होती है. सो आई ऑलवेज फील कि यू नो वो यू एंड आई कैन टॉक अबाउट दैट ऑफ the thing, but I just think that it's very important to share. And when you are such a happy-go-lucky person, like you said, everyone thinks I'm always happy. Even I have my bad days too. Yeah, of course you do. I have very And you know, you're not going to have happy times all the time. There will be pain. There will be this thing, and that makes you real. Yeah. You know, it makes you real. Yeah, but sometimes I think the expectation to be real seems a little bit bizarre to me. अभी किसी ने like we posted a reel ना, my husband and I, उसमें हम बड़े normal अपने खुश चल रहे हैं, तो किसी ने बोला आप लोगों का झगड़ा कब होता है, you know, like they said like it's a bad thing. तो मैंने दिल में सोचा क्या चाह रहे हैं कि अब घर में लड़ाई हो तो मैं रिकॉर्ड करके लगा दूँ, मैं क्या you know, like I don't know कि अब जो रियल की एक्सपेक्टेशन हो गई है वो क्या करें, मैं अपने घर में कैमरा लगा दूँ, बिग बॉस बजा लूँ, क्या करूँ, रियलिटी शो करने को. हाँ, लाइक तमाशा. और कुछ लोगों ने अपनी लाइफ्स को इतना, अगेन ये भी एक प्रॉब्लम होता है एज कंटेंट क्रिएटर्स, पीपल एक्सपेक्ट कि आप अपनी पूरी जिंदगी दिखा दोगे सुबह से लेकर रात तक, और बहुत लोग दिखा देते हैं. तो जो नहीं दिखा रहे होते नहीं, तो लेकिन जो नहीं दिखा रहे होते फिर वो उनको वो वाली जिंदगी दिखाओ ना जो एक्साइटिंग है. किसने बैठ कर रोने धोने, यहाँ पे ना यही तो चक्कर है. हाँ कि थोड़ा, हाँ ठीक है, लड़की, हाँ लेकिन जब लड़की हंस रही है, हाँ तो फिर मसला है. तो मसला है. मतलब बनाए भी क्या चीज बनाए ना, ऑडियंस को पसंद नहीं आता. आई अंडरस्टैंड कि तुम टीवी से क्यों भाग गए. क्यों नो मैं क्यों भागती हूँ भाई, बहुत ज्यादा, मतलब कंटेंट वेयर आई कैन बी कि नॉर्मल लगे. हीरो हीरोइन को जरूरी नहीं है कि लंबा दुबला गोरा पतला. एग्जैक्टली, वो हीरो हीरोइन अपनी जिंदगी में, आप हीरोइन हो, आप तो खैर वैसे भी हीरोइन हो, बट एक आम इंसान भी एक मेन कैरेक्टर हो सकता है ना फिल्म में. अरे डूड, हु इज दैट वुमन, द ब्लॉन्ड chick who was Rebel? I love her, man. I was watching her yesterday comedy channel के ऊपर ना, when she came on and the two broke girls. Yeah. And I'm like यार ये क्या चीज है. But they could like when content or like a Netflix series. Yeah. I don't know if you've heard of Good Girls. Good Girls Netflix series है. Most of the women are curvy-ish, ठीक है. But the story isn't about them being curvy. हमारा ही होता है कि अगर गलती से भी कुछ बना लिया उसके ऊपर ही तो इतना ज्यादा वो होगा कि उसी के ऊपर फोकस होगा कि वो मतलब होगा ठीक है बस, you know, even I think just treat her as a normal person, right? Yeah, normal person की normal story नहीं दिखाएंगे. A huge part of it would be her weight. You know, ये बड़ा प्रॉब्लम है कि फिजिकल अपीयरेंस. तो नैरेटिव चेंज करना बहुत जरूरी है, which is happening now. Yeah, if I was younger and I saw women like myself on billboard, like mashallah, when I see myself on a billboard or I see myself on a magazine cover, I wish years ago, like 10-20 years ago, I could have seen that and normalize हो जाता, you know, that you could be beautiful genuinely. You're not कि वो charitable वाला beautifully, but like you could be considered beautiful even if you are not conventionally fitting into boxes that people have decided that you should fit in. Yeah, but those boxes are also like we've trying to move away from the shallow culture. No, I think the generations that are coming think very differently. They think they don't. हमारा जो ज़माना था जो greed is good वाला जो था ना, नहीं Wall Street 80s, Ferrari चाहिए, mansion, yacht, okay, fancy designer clothes. That was that era. Dallas, जो series चल रही होती थी, ये चल रही होती थी, Dynasty and Dallas. So those were the oil rich countries, superpowers, and now we're kind of moving into a different direction. और जो हमारी जो generations हैं, they are not interested in fancy houses and property and ownership. They want experiences. And they want fun. And they don't necessarily want the same thing. उसके भी 1000 बंदा, अब जिस तरह 1000 बंदा शादी पे ना ही आए भाई, खुदा के लिए 150 बंदे बुलाने, और वो भी बहुत ज़्यादा है कि अपने करीब दोस्त, and we just want to have fun, जैसे तुमने किया अपनी शादी पे. मुझे डांस करना है, मुझे मत बैठाओ घूंघट में बैठा के, मुझे वहाँ सड़ाओ मत. सिर्फ घूंघट की बात नहीं होती, अब तो खैर डांस भी करने लगे लोग. बात सिर्फ डांस तक की भी नहीं है, वो ये कि अपने डिसीजंस खुद लेना कि मेन्यू में क्या होगा, वेन्यू क्या होगा, कपड़े क्या पहनूंगी, हर चीज़ तो लोगों ने वो डोमिनेट करनी होती है हमारे यहाँ में. और अगर कुछ बोल रही है तो बदतमीज है या यू नो ब्राइडजिला है, तो वो वाले डिसीजंस आई थिंक हर एक का हक होना चाहिए कि जब जिसकी शादी
लोगों की एक या चलो दो दफ़ा हो जाती है शादी, तो वो उनकी मर्जी से होनी चाहिए जो भी सिचुएशन है। अरे भाई हर चीज़ आपकी मर्जी से होनी चाहिए, आप ही की गलतियाँ होनी चाहिए, आप ही को ओनरशिप लेनी चाहिए, वरना माँ बाप आपके लिए डिसाइड करें। मैं तो इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि भाई आप क्यों डिसीजन ले रहे हो। हाँ, उनको छोड़ दो भाई, उनको करने दो, जिससे शादी करनी है करने दो, उनकी जिम्मेदारी जब आपने उनको बड़ा कर दिया है तो उनकी जिम्मेदारी। व्हाट्स नेक्स्ट? Just my shows. Let's see if the sitcom continues. I'm hoping ke wo hoga. Inshallah. I work with brands, so inshallah that will continue. I do a lot of fashion campaigns now. Yeah. So that will also continue. Yeah, like Ashley Graham, everybody. Are you a fan? Of course, I follow her. I love her. I wish we had that kind of. I love Lizzo. I love Lizzo. Yeah. And she was so cool at the Met Gala. Yeah, she's completely herself. And she's like cool. She's in a league of her own. I wish we had half of that freedom. But वो भी नहीं है, हमारी limitations बहुत ज़्यादा हैं. And I hate it when people compare us to Indian comedians or you know other like people who are not from here. When they compare us with them, I don't even know Indian comedians, female comedians. Really? They're good also, but they don't work with the limitation that we work with. So you have to be fair in that sense. That's true. As a woman, there's so many do's and don'ts. Some self-imposed, but a lot of them imposed by others. कि वो हम उस तरह पे उस level पे जा ही नहीं सकते. कोई freedom हमारे पास वो है नहीं. I want to see you write a movie. I want to see like 8 of you girls come out, and I don't know, I see like all these Wonder Women and you know like we often talk about that, by the way. Marvel comics happening with all these fabulous women. So again, a lot of mainstream channels they work with Indian content creators, and I'll give you an example. जैसे ये Amazon Prime पे बहुत सारे shows होते हैं जो सिर्फ Indian comics होते हैं उनके अंदर, male female both. We don't have those opportunities. अभी you said कि तुम्हारा venue इतना random होता है हमेशा, because there are no venues that are friendly for improv stand-up, that are improv and stand-up friendly. We don't have venues. We don't have venues, period. Ask me. And then we have to pay so much for good venues or decent venues. We have to pay so much that we don't make a lot of money from improv shows unless they're corporate shows. Corporate shows कभी-कभी होते हैं. Public shows से कितने पैसे मिलते हैं? So there's not enough opportunities. Platforms नहीं होते हमारे पास. Platforms नहीं है, और बिल्कुल ही तो और भी खत्म होते जा रहे हैं ना events तो after COVID and inflation, floods, हमारे तो मुल्क में पता नहीं क्या-क्या होता रहता है. तो बहुत मुश्किल है काम करना हमारे. Well, anyway, you're gonna just rally on. I'll still manage. I will hear Faiza's voice as an animated person as well. I'm 100% sure of that as well. That's gonna happen too. Inshallah. Inshallah. Thank you for always believing in me. No, I will. You've always believed in me. Yeah. From the day that I met you, I knew that you liked me. You know, I had a good feeling. Man, I'm just in awe. I'm in awe of you because I was like, what a rock star, man. I mean, I mean it from my heart. I know. Every time I felt it. And we talk and everything. I'm like, you know, but I haven't told you enough. आज बैठ के हमने almost 2 घंटे. I don't know how you edit it. यार तुम्हारे साथ मैं कुछ करूँगी. तो वो बुला लेना, मैंने कहा मुझे एक कैरेक्टर की जरूरत है, अगर तुम उसमें गाना चाहो तो मैं आ जाऊँगी. मुझे ऑडिशन कर लेना. अच्छा ठीक है. शक्लें भी बना लेती हूँ. अच्छा तो मैं करूँ ऑडिशन? वहाँ तो मुझे ऑडिशन करोगे ऑब्वियसली यार. ऐसे तो नहीं बनने वाले ना. ऐसे तो नहीं होने वाला. हाँ सही है. Done. I'll audition. Alright, ठीक है, we're done. Okay, great. Alright, thank you so much. Thank you Faiza for giving me so much time. और ये जाके वीजा ऑफिस, पता नहीं क्या दिन था इसका यार, पागलों वाला दिन था. ये फिर भी आ गई है और मुझे कॉन्स्टेंटली. और यार आज के दिन तो लोग ही नहीं निकले, ये पता नहीं कैसे क्रू आ गए. हाँ बड़ा मुश्किल था आज. मगर आज वैसे इस वक्त तुम लोग घर तो जा सकते हो. आपकी भी हिम्मत है by the way that you doing this, because मुश्किल दिन है to be doing this. जब मेरे माँ बाप गुलशन में रहते थे, हम वहाँ से निकल आते थे, टायर जल रहे होते थे, कुछ नहीं होता. Because you know, I just think Pakistanis don't want to work. नहीं, उनको काम भी नहीं करना है, बस वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं. पेट्रोल नहीं है, ये नहीं है, पेट्रोल स्टेशन बंद है, बंद है, ओ बंद है. हाँ, हमें बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है. लेकिन मुश्किल वक्त में ऐसे निकल भी आते हैं हम लोग. इंटरनेट. हम लोग जितने मजबूरन रेजिलिएंट हैं उतना शायद ही कोई हो. मैं भी तैयार होके पहुंच गई, आप भी तैयार होके बैठे हुए यहाँ पे, हम आ गए. मैंने इवेंट्स किए हैं. आई रिमेम्बर कि इतना बुरा वो हादसा हुआ था निश्तर पार्क में, 40 लोग मर गए थे. एंड आई वाज लाइक, मैंने क्लाइंट को बोला वो सब बंद था. ओके. एंड मेरे वो जो मैंने चीज़ें बनाई हुई थी वो रंगी टाउन में फंसी हुई थी. तो पेट्रोल भी नहीं था. मैंने अपना ट्रक निकाला, गोदाम भेजा, उसमें से कुछ चीज़ें निकाली कि डिस्प्ले की, ले आई, सबको मीडिया सारा आ गया. इट वाज इनक्रेडिबल एंड वी डिड इट.
So I'm just saying कि अगर आप कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आप उसको बहाना बनाना चाहो तो बहाना भी. Obviously we don't want anybody in danger, okay? Also, I'm not saying that, but I'm just saying कि it is possible and we have lived through these times so many times. ये पहली बार तो नहीं है ना. कितनी दफ़ा हमें धचके लगे. हाँ, ट्रू. हमने कहा कुछ ना कुछ जुगाड़. उस्ताद है हम लोग. Okay. All right. Thank you very much for coming and thank you very much for watching our show. Please do not forget to like and to subscribe this little thing at the bottom that's coming. Hey guys, this is Faiza Saleem. Please comment, like and subscribe to our channel FWhy Podcast.